I welcome all of you on behalf of HMAI Ahmedabad unit. Respected senior Dr. Bhaskar Bhai and dear colleagues. Today I have a privilege to introduce Dr. Tarkeshwar Jain from Jaipur, who is such a nice personality, who is working for homeopathy since more than 25 years. His understanding regarding homeopathic subject is very clear and in a scientific way, and that's what required. I feel reason why is so clear. His education prior to homeopathy. See, before he took the admission in the homeopathy, he completed the Bachelor of Science in the year of 1987. Then he took the admission in MBA. He completed MBA in 1989. And then he took the admission in the BHMS and completed their BHMS in 1995. And after that, he completed MD in homeopathy in 2003. Such a long journey prior to homeopathy. And that's the main reason why he's so clear in his concept regarding the homeopathy. See, if we think about ourselves, when we took the admission in the homeopathy, just after completion the 12th science, આપણે લોકો સાયન્સ માટે એટલા સિરિયસ હોતા જ નથી. હોમિયોપેથિક સબ્જેક્ટ એ સમજ પડે કે એની સિરિયસનેસ સમજ પડે એના પહેલા તો આપણે ફાઇનલ યરમાં પહોંચી ગયા હોય છે. And that is the reason why we are struggling more in the initial days of our practice. Our concepts were not clear. And today, he is going to speak about the herring guiding symptom, which is the basic books, and hardly, at least मैं तो वांची ज નથી હજી સુધી, એક કે બે વાર કદાચ વાંચી હશે. In the journey of 35 years of my practice, hardly once or twice I have touched the herring guiding symptom. But understanding regarding the herring guiding symptom is excellent. I have attended twice or thrice his seminar. We kept one day full seminar in our Anubhuti 2 years back, and we learned a lot. He is a good clinician as well as good academician. He is HOD in the Materia Medica, the Homeopathy University. Today morning only I talked to him and I came to know about his research work, and he is doing PhD in autism only. He is dealing autoimmune diseases, chronic cases, along with he is doing research work on the autism. So such a long journey of a homeopathy. So I welcome on behalf of the HMAI unit Ahmedabad, Dr. Tarkeshwar Jain. Please welcome. Sir, please start. Thank you very much, Sunil Bhai, for such a nice and beautiful introduction about me. Although I know I deserve very less than what you have spoke about me. And it's indeed a pleasure for me to be here on the platform of HMAI Ahmedabad. And an opportunity to meet such a senior homeopath like Bhaskar Bhai is there. I can see Dr. Ketan Shah is there, and many senior homeopaths from Gujarat side to whom I am known personally. It's indeed a pleasure for me to be here and interact with you all, and to talk something about Herring's guiding symptom, which is indeed, as you yourself said, that even in a long journey of homeopathic practice, very few moments occur when we open this book. So neither during the student life, when we are studying BHMS, nor during the PG time, nor even during the practice, we rarely refer our source books, which I understand is the most pivotal source of
Homeopathic Medical indeed. And when we go through the literature, or especially old literature, source books, then we really encountered many gems, many beautiful symptoms, many beautiful remedies, which are still ignored and not used in our practice. While these days I'm seeing that we are jumping every day to the new remedies. रोजाना नई नई दवाइयां मार्केट में आ रही है and we don't know about the background of those remedies. We don't know when those remedies have been proved, whether they are being proved or not. Even many remedies are based merely on the assumption, just on the knowledge of periodic table, just on the knowledge of toxicology, and we are simply including those remedies in our mathematica every day, and we are not sure whether these remedies are well proved or not, whether they are clinically verified or not, and we are jumping on those new remedies. While in our own literature, in our own treasury, we have many such beautiful remedies which are there in our literature, but which are not practically utilized, not well represented in our practice, in our further literature. There are many such remedies when we go through the herring guiding symptom, or even when we go to the Mathematica Pura or the pharmacodynamics by Richard Hughes, we see many beautiful remedies which are there. But why I am so keen about herring guiding symptom, and why I really love to work with this book or the remedies listed in this particular book, there is a sound reason behind that. As we all know that herring's guiding symptom of Mathematica is one of the major source of all the Mathematicas that we see in practice till date. All the major repertories are based on the herring guiding symptom. And the beauty about this book is that the remedies which are listed in this book are coming or are taking place in this book only when these remedies are not only had the symptoms of the prover, but when the symptoms, those symptoms which were given by the prover, were later on verified clinically, and not once or twice, but when these symptoms were verified multiple times in practice. एक ही सिम्टम जब बार बार प्रैक्टिस में वेरीफाई हुआ, उसके बाद में इट टुक प्लेस इन द हेरिंग गाइडिंग सिम्टम. That gives that creates an authenticity about the book, that creates an authenticity about the work that Herring has done. None of the remedy, which is even the smaller remedies, even with the low grade symptoms, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में अगर कोई लो ग्रेड सिम्टम भी है, तो वो भी तभी आ पाता है जब उसका रिपीटेडली क्लिनिकली वेरिफिकेशन हुआ हो. Otherwise, it will not be placed in herring guiding symptom. This is the beauty of this book, and that is the reason why I started working on herring guiding symptom. Because when in my initial teaching years, when I was teaching Mathematica with the help of various books, ranging from Allen's keynotes to Kant's lecture of Mathematica to the modern Mathematica of the Robin Murphy or Vithalkas or Philip Bailey or Rajan Sankaran, whoever the well-known or well-acclaimed authors were present during the time of teaching. I considered all those, I studied all those, but somehow I could find that every book of Mathematica which I am reading about is some or other way is pointing to herring guiding symptom. चाहे हम विठोलकस की एसेंसेस ऑफ मैथमेटिका पढ़ रहे हों, चाहे हम राजन संकरन की सोल ऑफ रेमेडीज पढ़ रहे हो, चाहे फिलिप बैली की हम पर्सनालिटीज पढ़ रहे हो, some or other ways they are reflecting or they are pointing towards herring guiding symptom. And over a period of time, with the inclusion of number of rubrics in the repertories, number of new rubrics, new remedies in the repertories, I could really make out that there are plethora of symptoms nowadays, plethora of remedies nowadays. But how much these remedies are authentic? When you look in the source for the repertory about the new inclusion of a symptom or a new inclusion of a remedy, you don't find anything authentic. While when you look in the sources of Kant's lecture, when you look in the NUR repertory where the remedies are listed, if you open the source is directly linking to herring guiding symptom. And it has been repeatedly verified in the practice, not only by myself, but many teachers of to whom I could interact very, very closely. I could understood that they used to say, even many times I met two or three times with Dr. R.P. Patel sir, and he always used to say that even a third grade symptom of Kant's lecture or Kant's repertory with a third grade remedy is still a gem in comparison to the first grade symptom or the first grade remedy listed in the complete repertory or in the Roses and Duwards or the synthesis repertory or the Murphy repertory. That was his personal statement. कैंट का अगर थर्ड ग्रेड का सिम्टम है, थर्ड ग्रेड की रेमेडी के साथ भी है, तो भी वो जैम है. और चाहे सिंथेसिस रेपर्टी का चाहे फर्स्ट ग्रेड का सिम्टम हो या फर्स्ट ग्रेड रेमेडी हो, तो भी आप उसके बारे में अश्योर नहीं कर सकते इफ इट इज अ न्यू इंक्लूजन. इफ द इंक्लूजन इज ओल्ड वन,
if it is being borrowed by the Kent's repertory or Boger-Bonning-Gaussian, because synthesis repertory is just the combination of many repertories. So if it is being borrowed by the Kent's repertory or by the Boger-Bonning-Gaussian repertory or by the Phatak repertory, it is still believable. But those which are new inclusions, which have no specific sources, you cannot really trust on them. While if even the lower grade symptom of Kent's repertory is still more reliable, more authentic. And same is the story of Fata repertory, same is the story of Boger-Bonning-Gaussian repertory, and same is the story of Nur repertory. And when you look about the sources of all these repertory, they all date back to Herring guiding symptom. So I thought that why not to focus my teaching, to focus my work on this particular book when everything is pointing to them. And when I started working this book, I started taking projects. I started giving projects to my PG scholars, to my PhD scholars. Many new remedies we tried, and I really found that these remedies, which are still not available in market or is still not so well represented in Mathematica or repertories, are really a gem. Are really a gem. This is the beauty of this book, because whatever the contents are there in the book are clinically verified. This is the beauty. When you start any remedy in herring guiding symptom, you open any remedy, you open Etromeraticum, you open Aconitum, you open Arsenic album, or even the smaller remedies like Asclepius tuberosa, like Nicolum, like Cobaltum, even the smaller remedies. In the beginning of the lecture, in the beginning of the narration, Herring has clearly mentioned that what are the sources from which this remedy had been included in my this chapter. He clearly mentioned whether it is a reference of any article in the British Journal of Homeopathy or Hahnemann Gleanings or the US Journal of American Journal of Homeopathy or any book from wherever he could verify that if I am writing something about the cobaltum, if I am writing something about the nicolum, then certainly those symptoms which are coming in my collection are having the references from either from some articles or from some book, or the symptoms which were being verified by multiple times by the multiple authors. Then only they could took place in herring guiding symptom. So this gives the authenticity, this gives the credibility. But unfortunate part is that when the modern literature came up and the modern Mathematica came up, many authors either they could not include all those symptoms, or they have misrepresented in many places, because what we actually see in herring guiding symptom and what we see in the coming Mathematica, there are certain variations. So my today's focus is mainly on smaller remedies which are there in the herring guiding symptom, which are having some unique pattern of symptom, but is still not available in Mathematica or repertory. Still, any of the Mathematica or repertory are not representing those symptoms. And then I also want to highlight that what is the benefit when we use herring guiding symptom in practice, because this is the style of herring guiding symptom, that when he mark any condition, when he write about any particular symptom, whether it is a physical symptom or a particular symptom, at most of the places he is mentioning a coexisting clinical condition. Now this is the beauty of herring guiding symptom, that whenever you whether it is a mental symptom or whether it is physical symptom, he clearly denotes that in which clinical condition you will observe this particular mental symptom. It's not that a particular mental symptom of a remedy is a general state of that patient, is a general constitutional trait of a particular remedy or a particular constitution. No, it's only there are certain situations, there are certain mental symptoms which are coming up only when a patient is suffering from a certain clinical condition. It's not a general rule. I will give you many examples. I just give a few small examples just to make my point clear. There is one small sensation we call that formication or crawling sensation. Now, while talking about the crawling sensation, when you look in the different remedies of herring guiding symptom, you will come to know that if it is a digitalis patient, then crawling sensation in a digitalis patient occur during the anginal pain. This is the one state. Another state is, again, the symptom is crawling sensation, symptom is formication, but he clearly said the crawling sensation in digitalis appear when the patient is suffering from angina pectoris. A crawling sensation in indigo occurs when the patient is suffering from diarrhea. A crawling sensation in a patient of Mancinella occurs when the patient is suffering from intermittent fever. Now, symptom is one, sensation is one, but he has beautifully classified that crawling sensation all over the body. When it is occurring with angina pectoris, then the remedy is digitalis.
When it is occurring with the diarrhea, then the remedy is indigo. When it is occurring with the fever, then the remedy is manzanilla. So one particular clinical symptom or a one particular physical symptom associated with a particular clinical condition differentiate the way the remedy should be selected. This is the beauty of herring guiding symptom. And this is not just with the physical symptom. There are many mental situations which are appearing with certain clinical condition, and herring has beautifully classified those states. So I will be talking about many mental concomitant symptoms which are available during certain peculiar clinical condition about all those things. But initially I would talk about few small remedies and why it is different from Mathematica Pura or Encyclopedia, which are other source books, and we will know about all those books also. Because in Mathematica Pura also we see the listing of pure symptom given by the provers, but those symptoms are definitely they are coming by the provers, but not verified clinically much. This is where Hahnemann also lagged. Same is the story about Allen's Encyclopedia. We see a number of symptoms over there, more remedies, more number of symptoms than the Mathematica Pura you find in the Allen's Encyclopedia. But again, those symptoms are the symptoms of provers only. You don't know about their verification, about the clinical verification, about their clinical authenticity. While when you talk about the herring guiding symptom, every symptom, whether it is the smaller one written in the normal language or the Roman language or in italics or in the bold, are coming to this book only when they are being multiple times verified clinically. That is the beauty of this book, and that is the credibility of these books. And that's the reason why I am working more with this particular book. And these are the major books which are based on herring guiding symptom, and we definitely use in our everyday practice all these books, whether it is Kant's repertory or Kant's lectures on homeopathic mathematica or Nur repertory is entirely based on herring guiding symptom. Rather, Nur was closely a relative of herrings, and he, after the demise of Herring, Nar and Rao, two were the keen homeopaths who took up the work, because Herring could not complete his entire work. Just after the accomplishment of the second edition, he was dead. He died unfortunately, and the rest of the eight editions were worked majorly by the Nar and Rao. So Nar repertory is entirely based on Herring guiding symptom, and a beautiful repertory. I am very sure the senior homeopath who are sitting over here, they have used quite often this repertory, and in acute prescribing, in the snapshot prescribing, there is no comparison of the repertory than any other book in homeopathy. This is such a beautiful work Nur has done. So I would start with a very small case, because these days everyone know that we are dealing or living in the Corona era, and everywhere, wherever we go and talk COVID and COVID and COVID, that is the only subject of conversation everywhere. And we as a homeopath are having a major responsibility, because we are, in fact, the only system that has some vital answer about COVID is homeopathy, whether the government accept it or discard it, but this is the fact. And to us, the fortunate part is whether the governments are acknowledging or not acknowledging, but the patients are definitely acknowledging. They are now gradually realizing that if you really want to get rid of this COVID, if you really want to lead a healthy life after COVID, only beneficial resort is homeopathy, not even in allopathy, not even in Ayurveda. They know that the only resort is homeopathy, and those who are the believer of homeopathy, they do not go anywhere. They rather try to avoid hospitalization. I have many cases of COVID where patients were advised to go immediately to the hospital, but they insisted in homeopathy. They returned to our clinic and they really got benefits also. So this is the one small case why I want to highlight, because I want to talk about the small remedies and the approach that we need to adopt when we are dealing any kind of COVID case, any named case, because this is also a miserable situation that many people are making some specific groups for the treatment of COVID. बहुत सारे लोगों ने ऐसे बना लिए हैं कि अगर कोविड है तो होम्योपैथी में भी कुछ ये दवाइयां हैं जो काम करेगी, या कुछ ये सेट ऑफ मेडिसिन हैं जो इफेक्टिव है। कई लोगों के अपने नोशन है कि नहीं, जो हम बता रहे हैं सिर्फ वही दवाइयां हैं जो इफेक्टिव है, बाकी दवाइयों का कोई पता नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि हमारे लिए चाहे कोविड हो, या चाहे ब्रोंकियल एस्थमा हो, या चाहे गैस्ट्राइटिस हो, या चाहे डायरिया वोमिटिंग हो, हमारे लिए तो अप्रोच एक ही रहती है। मैंने हमें एक ही तरीका सिखाया है इलाज करने का, और वो तरीका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी,
इसके अलावा और कोई तरीका होम्योपैथी में इलाज का मेरी समझ में तो होता नहीं. Unless you are not focusing on the individuality, you cannot treat the patient. And this is the approach for me, at least. I do not get prejudiced by the name of remedies or by the name of remedies that my seniors are using or the other stalwarts are using for the treatment of COVID. Whenever a COVID case is coming to me, whether it is a confirmed case or a suspected case, my approach always remain open, and I just look into symptom only. And symptoms are only the true guide for finding me the remedy. So I am not much biased about the name of disease or the name of prevalent remedies. Rather, I try to remain myself open and just try to look out what is peculiar in a particular case and focus on those symptoms only. So this is a small case of a suspected COVID where the patient was not confirmed, but he was a suspected COVID because he was in close contact with his friend who got diagnosed COVID positive, and he eventually got hospitalized also. And since he was living with his friend and eating and drinking together and sitting together, meeting every day, so he also started developing symptoms in 2 3 days. And definitely they were all pointing to the COVID only, but he was afraid of going to the hospital. He was afraid of going to the test also because and during that time guidelines were very strict. If you are found positive, your entire family will be quarantined or you will be put in the quarantine centers. Nowadays things are quite easy, quite relaxed, but this is around 2 months ago, 3 months ago story when the situation about the about being diagnosed as a COVID positive was really difficult. So उसने टेस्ट करवाना जरूरी नहीं समझा और उसने तुरंत मेरे को फोन किया क्योंकि he was already in touch with me. So he also started developing symptom just after 2 3 days. His friend was diagnosed and he developed fever with chest pain. He consulted me on the phone with following set of symptoms. He had a dry, weakening cough, which was worse in evening. He has constricted feeling in throat. He has cough with irritation in larynx. There was cutting, stitching pain in left chest during inspiration. Chest pain was worse by taking deep breath and motion. Fever ranging from 101 to 102. Hot perspiration along with fever. This is, he told me on the phone. All those symptoms were taken on the phone only. Pain with stiffness in knees and hip joint was morning on waking. Painful watery stool 3 4 times a day. This was also a phenomena, and it is also there that many COVID positive patients are complaining about the diarrhea in the beginning of symptoms. No specific thirst, no thermal shift, no changes in mental or emotional pain, sounding normal over phone. Although I tried to collect as much I could, but this is the limitation when you are working in through telemedicine. Then you cannot have every finer detail of the patient. You cannot have the observing things that you see during the physical consultation, but then you have to work in the compromise situation. And what I could collect over the phone, this was the set of symptoms. So if you see about the number of symptom, about the length of symptom, and if you repertorize all those symptoms, the major remedies that comes up are bryonia, sulfur, pulsatilla, phosphorus, natrium muriaticum. These were the major remedies which are pointing to this particular set of symptom. And but the idea was that none of those remedies was really clicking to me. And there was certain symptom definitely pointing to the bryonia, but then I could ignore about bryonia because thirst was not very marked. And then pulsatilla also because patient had every aggravations was there, and thirst was not very specific. He had dry cough, and then while talking on phone, that the way a pulsatilla lady or the pulsatilla patient present themselves, that was really not available because he was sounding very confident and very agile and very clear. There was no hesitation in his talking. There was no weakness in his words, in his talking, in his oral language. So pulsatilla I could not fit to my mind. Phosphorus also was indicated and coming higher in the totality, but again, he was not agreeing totally to the phosphorus, not the way phosphorus present himself, even on the phone. That signs were not present, and thirst was also not very marked. The side of chest was also not very clear, so I could not take phosphorus also in the consideration. Rustox was covering many symptoms. It was the damp weather,
2-3 महीने पहले की बात है, उस वक्त हमारे यहाँ पे अच्छी बारिश भी हो रही थी, तो रस्टक्स का मौसम उस टाइम बना हुआ था, और चूंकि उसको कैटरल डायरिया भी हो गया था, और काफी सारे ऐसे सिम्टम थे, मॉर्निंग एग्रीवेशन भी था, जब बैठ के उठता था तो भी उसको पैरों में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, तो रस्टक्स मेरे दिमाग में काफी क्लोजली चल रही थी, बट देयर वाज फ्यू सिम्टम्स व्हिच वर क्लिकिंग टू माय माइंड, एंड इनफैक्ट मुझे इस छोटी दवाई के बारे में कभी भी ध्यान में नहीं आता। मैं शायद डेफिनेटली रक्सटॉक्स या ब्रायोन या इनमें से ही कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता, अगर मैंने हेरिंग गाइडिंग सिम्टम ना पढ़ी होती, अगर मैं इसके बारे में नहीं जानता होता, या इन दवाओं के बारे में मैं नहीं जानता होता, तो मुझे अचानक से मरीज का एक ही सिम्टम था जो मुझे क्लिक कर गया दिमाग में, फीवर विद हॉट पर्सपिरेशन। वो बड़ा उसने एम्फोसाइज करके फोन पे ये बात बोली, डॉक्टर साहब जब भी मुझे बुखार आता है तो मुझे पसीने में ऐसा लगता है जैसे मेरा पसीना जल रहा है, मेरा पसीना मुझे गरम गरम लगता है, ये उसके अपने लैंग्वेज से, और मेरे दिमाग में ये सिम्टम कहीं ना कहीं रुक गया था। तो दिस सिम्टम ओनली लेड मी टू थिंक अबाउट इन अ डिफरेंट वे, और अचानक से मुझे क्लिक किया कि मैंने ये सिम्टम कहीं पढ़ा है, मैंने ये सिम्टम कहीं पढ़ा है, या मैंने पढ़ा है। और आजकल क्या, मैं पिछले करीब 5 साल से लगातार ज्यादातर लेक्चर हेरिंग गाइडिंग पे लेता हूँ, अलग अलग सेमिनार में, तो आई वाज नोइंग समवेयर आई हैव टॉट दिस सिम्टम इन अ पर्टिकुलर रेमेडी, आई कुड रिकॉल द रेमेडी, एंड दैट रेमेडी वाज डेफिनेटली एसिलेपियस ट्यूबरोसा। एंड नोएडा में नवंबर 2019 में मैंने एक सेमिनार ली थी, तो वहां मैंने ये दवाई पढ़ाई थी। तो मुझे अचानक से याद आया कि दिस रेमेडी हैड दिस पर्टिकुलर सिम्टम, फीवर विद हॉट पर्सपिरेशन। Now then, when you get a key, then you try to open the lock. और मुझे एक चाबी मिली उस सिम्टम के रूप में, then I started pondering in the literature. I first looked into the boric mater medica, and I found many symptoms which were in similarity with my patient, whether it was the catarrhal diarrhea. If you see in the Asclepius tuberosa, you will find catarrhal diarrhea over there. वहां पे एज ए प्रोमिनेंट सिम्टम दिया हुआ है, कफ के सिम्टम, चेस्ट के सिम्टम, फीवर के सिम्टम भी आपको काफी सारे बोरिक मैथमेटिका मिल जाते हैं, बट अगेन द सिम्टम विच क्लिक टू मी वाज नॉट अवेलेबल इन बोरिक मैथमेटिका। सो देन आई बेटर थॉट टू ओपन द हेरिंग गाइडिंग सिम्टम, क्योंकि सबसे पहले हमारी भी आदत होती है, बोरिक इज द मोस्ट हैंडी मैथमेटिका दैट वी कीप ऑन द right side of our hand, and immediately we open the boric mathematica to confirm the remedy or to confirm the symptom. But I could not find this particular symptom in boric mathematica, so I insisted and on hearing guiding symptom, and I opened the hearing guiding symptom, and there I found this symptom exactly written like this: high fever with hot sweat. Now, this symptom was neither properly presented in Mathematica, nor it was properly presented in even the repertory. I opened the repertory also, where I found perspiration hot. There was Asclepius, but not with the fever. My case had a very clear symptom, fever with hot perspiration. But even in the Kent repertory, in the synthesis repertory, there is a rubric perspiration hot. And there are many remedies listed. Asclepius is also over there, but not with the particular guiding symptom that my patient was presenting, fever with hot perspiration. Now, even you have a rubric fever, perspiration, heat with, that also has Asclepius, but again, that is also not justifying the core feeling the patient is having. This symptom creates a different kind of meaning: fever, perspiration, heat with, but it is not exactly the feeling that my patient is calling. He says कि उसका पसीना ही उसको गर्म लगता है, पसीना गर्मी के साथ नहीं आ रहा है, पसीना हीट के साथ नहीं आ रहा है, उसको पसीना गर्म लगता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हेरिंग गाइडिंग सिम्टम में लिखा हुआ है, अगर आप खोल के देखेंगे, you will find exactly the same line of symptom: high fever with hot sweat. Now, none of the repertory has exactly that same presentation. Neither any of the Mathematica has this same presentation, but it is exactly written in the same way in hearing guiding symptoms. So, on the basis of this knowledge, on the basis of this authenticity of hearing guiding symptom, I prescribed him Asclepius 30, just 3 doses for one day, and he reported me next day morning with relief in chest pain, cough was better, stool frequency reduced, though fever was still there. But I am really not bothered much about the fever in the COVID. Rather, I assure my patient that don't worry, it is a good sign that you have a high fever. I am more worried in the cases which are lingering or which are having the low grade fever. मेरा जो अपना तजुर्बा है कोविड को ट्रीट करने का, तो मुझे ये समझ में आई बात, और हमारी होम्योपैथी भी यही बताती है, ज्यादातर केसेस जहां पे लो फीवर चलता रहता है, 99.5, 99.8, 99.9, 100, इससे ऊपर फीवर जाता ही नहीं है शुरू के 4-5 दिनों में, वो केस ज्यादा डिफिकल्ट हैं।
उनकी इम्यूनिटी ज्यादा लो है, वो ज्यादा वीक है, उनको ट्रीट करने में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो केस शुरुआत में ही जिनमें 101, 102, 103 तक बुखार आता है, वो केस कंपैरेटिवली जल्दी ठीक होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल ज्यादा स्ट्रांग है। तो फीवर इज नेवर एन अलार्मिंग सिम्टम फॉर मी, रादर आई फील गुड व्हेन पेशेंट सेज दैट ही इज having a high grade of fever, then I can assure him that your chances of getting rid of this infection is much more brighter than comparison to any other particular patient. तो बहुत जल्दी वो लोग ठीक होते हैं। इनफैक्ट वायरल फीवर जब मैं ट्रीट करता हूँ और जब मरीज बोलता है कि आज मुझे 104 105 डिग्री बुखार हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोविड, क्योंकि कोविड में मैंने कभी भी इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं देखा। जनरल वायरल फीवर में या डेंगू में 104 105 तक बुखार चला जाता है। तो मैं हमेशा मरीज को ये श्योर करता हूँ कि तुम चिंता मत करो, just keep yourself hydrated, drink more and more of water, and whatever remedy I am giving to you, just take it with the trust. And certainly these kind of patients relieve much quicker in comparison to people who are lingering with a low grade of fever. So here also his fever was not immediately subsided, it took some time, but his chest pain, his cough, his tendency to stool, his frequency to cough, that was certainly reduced in the very first day. And I didn't ask him to repeat the remedy because that was not really needed. Medicine has already started acting, but I simply asked to keep himself hydrated, drink more and more of water, and take either liquid or some semi-solid diet. And he called on third day with total relief in all the symptoms. He was not supposed to go to any testing lab, not supposed to go to get the CT scan done. Everything was resolved within just 3 days. So that is the beauty of remedies, when the remedies are selected on the basis of individuality. Now here I say that if I could have got prejudiced by the name of remedies, because everybody is prescribing bryonia or galsemium or arsenic, the moment you talk about the COVID and there is a set of remedies which comes up in homeopathy, there are groups who are prescribing bromium or ozonum or chlorum. There are people who are prescribing arsenic, bryonia, galsemium every day. There are many kind of formulations that have developed for the treatment of COVID, even in homeopathy. But when you keep your eyes open, when you focus only on the individuality of the patient, and you select your remedy only on that basis, then the results are much quicker in comparison to what homeopathic prescription is based when the totality is only partial. If it is a 100% totality, then definitely, if it is 100% minimum, then definitely the results are much more quicker in comparison to the totality, which is a partial totality, like you see in many polyclinic remedies even. I don't say that don't give arsenicum or bryonia because these are the most commonly used remedies for the COVID, but then always look for the totality. These are not the only remedies. There are many more remedies which can help us in treating COVID cases. Then there is one more small remedy for which I want to talk about. And why I am talking about this particular remedy is that nowadays many patients are coming with the sequelae of COVID. See, we have seen three phases of COVID. Initial phase was when we were talking only about the prevention. Then there came a phase when we were talking about the treatment. And now there is the phase when we are talking not only about the treatment, but there are sequelae of COVIDs. Many patients who are being treated for COVID, they turned up negative, but still after the treatment, they are suffering a lot. Even when they turned negative 15 days ago, 20 days ago, many patients have even died after being turning negative to the COVID. हमारे यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ कोविड नेगेटिव होने के बाद हो गई। क्यों? क्योंकि कोविड डेफिनेटली लंग्स को पकड़ता ही पकड़ता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं। नेगेटिव होने के बाद भी मरीज को हर वक्त थकान बने रहना, कमजोरी बने रहना, सांस की तकलीफ होते रहना। इवन नेगेटिव होने के बाद भी लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 80 85 तक चलता रहता है। घर में वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मरीजों को जानता हूँ जिनको नेगेटिव की रिपोर्ट जिनकी आए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए, बट अभी तक वो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, अभी भी उनको ऑक्सीजन घर पे चल रही है। तो ये सिचुएशन, ये सिक्वेली जो है, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है। और एज ए होम्योपैथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और आप सब भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो रोल है वो ऐसी सिचुएशन में सारी पैथी से ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो फीवर के सिक्वेलीज, जो वायर के सिक्वेलीज को बहुत ही इफिशियंटली ट्रीट करती है। ऐसी एक दवाई के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के बारे में बाद में भी बहुत सारे लोगों को खांसी पीछा नहीं छोड़ती है। खांसी लगातार उनको बनी रहती है। किसी को ड्राई कॉफ होता है, किसी को टिकलिंग कॉफ होता है, किसी को सांस के साथ खांसी चलती है, किसी को दर्द के साथ खांसी आती है। तो खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो विच टर्न टू बी नेगेटिव
But this, since this coronavirus certainly attacks to lungs, and majority or moderate to severely affected patient CT thorax shows ground glass opacity और वायरल निमोनिया सबको मिलता है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो कोविड आरटीपीसीआर नहीं कराते, सीधा ही सीटी स्कैन कराने लग गए हैं आजकल, क्योंकि वहां पे आपको मालूम पड़ जाता है कि आपको कोविड न्यूमोनिया है कि नहीं है. और ज्यादातर लोगों में जिनको भी कोविड इन्फेक्शन है उनको लंग्स में ओपेसिटी डेवलप होती ही होती है, और वो जो चेंजेस हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं. So after symptomatic treatment by any system of medicine, patient turns negative, but the CT thorax still shows patchy areas and consolidation in lungs. Perhaps that's the reason why patients are not able to get rid of this obstinate cough, pain, and tightness in the chest. And there is one small remedy, again listed from the herring guiding symptom, Myrtus communis. It's a very wonderful remedy, very small remedy, but why so useful? And I have used many times in practice in these days only. मैंने पहले कभी इस दवाई को कभी यूज ही नहीं किया, पर चूंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनका खांसी में उनको दवाइयां देता था, सिम्टोमेटिक दवाइयां देता था, फीवर के बाद जो कफ में लिस्टेड मेडिसिन हैं वो दी, ब्रायोनिया, बेलोडोना, बहुत सारी दवाइयां दी, बट आराम नहीं आ पाता था उनको. बट दिस रेमेडी हैज हेल्प्ड अ लॉट टू मी in patients who are having a hollow cough with a tickling sensation in chest remaining for a long time. बहुत दिनों तक वो खांसी जाती नहीं है, चेस्ट में टिकलिंग सेंसेशन होता रहता है, और एक ड्राई हॉलो कफ हर वक्त उनको बना रहता है. और इस दवाई की एक और खास बात है कि दिस मेडिसिन इज वेरी सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस. नाउ मेनी पीपल कंप्लेन कि जैसे ही वो ठंडा गर्म होता है, वो या तो एसी से कहीं बाहर गर्मी में आते हैं या गर्मी से अचानक से एसी में जाते हैं और तुरंत उनको खांसी छिड़ जाती है, सांस उठना चालू हो जाता है, सांस लेते वक्त दर्द होता है. इसका एक और बड़ा सिम्टम है कि लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है जो पीछे पूरा स्कैपुला तक ट्रेवर्स होता है. जैसे हम ब्रायनिया में देखते हैं, डीप इंस्पिरेशन के ऊपर, कफिंग के ऊपर बड़ा सीवियर पेन होता है लेफ्ट साइड में चेस्ट में, और पूरा पीछे तक जाता है, इंस्पिरेशन से डेवलप होता है या इंस्पिरेशन लेते हैं तो बढ़ता है. तो ये सारे सिम्टम जो है वो काफी कॉमन दवाइयों के भी है, but common medicines कई बार नहीं काम करती है. But this remedy has acted many times in many cases beautifully. Metus communis is a very nice remedy for the post-COVID cough. Again, this treasure, this beauty is available only in the herring guiding symptom. I didn't find much of the literature of Metus in whether it is Boric Mater Medica or other Mater Medicas, but it is very elaborately written in herring guiding symptom. This is a beautiful remedy for the pneumonia also. This is a beautiful remedy for the tuberculosis also. But the characteristic feature कुछ एक ही हैं. एक तो tickling sensation होता है चेस्ट में, ड्राई हॉलो कफ होता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस के साथ में एग्रेवेशंस होते हैं, और साथ में कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, और जरा सा भी चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है तो कॉफ एक्साइट हो जाता है. ये कुछ एक ही सिम्टम है जो इस रेमेडी को कंफर्म करते हैं. बट इफ दो सिम्टम्स आर अवेलेबल देन दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल रेमेडी. आप इसको प्रैक्टिकली अगर यूज करेंगे कोविड के बाद में जो कॉफ रह जाता है उसमें, देन दिस वुड रियली रियली हेल्प अ लॉट. दिस इज सच अ नाइस रेमेडी, and I have used in many cases. Every day almost one or two cases are there which are coming to me with the sequelae of COVID, and I am frequently using this remedy with very good result and with quick resolution of the complaint. This is the beauty of this remedy. There are many such remedy. एक जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारे मरीजों को, कोविड में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गले में ऐसा लगता है जैसे एकदम से बहुत जोर से स्पाज्म आ गया, जिसको हम बोलते हैं ना फंदा लगना, गले में फंदा लग गया हो, सिवियर, इतना सिवियर फंदा कि लगता है कि सांस ना तो अंदर आ रही है ना अंदर से बाहर जा रही है. इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन बोथ आर very painful and patient is having a shocking kind of sensation immediately. And we have many remedies. कोई ब्रोमियम के लिए बोलता है, कोई क्लोरम के लिए बोलता है कि ऐसा अगर सिवियर फंदा लगता है तो क्लोरम is a wonderful remedy, or a bromine is a very nice remedy when patient is having a sudden choking sensation. But ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक बार है रिचर्ड यूजेस की एक बुक आती है, फार्मेकोडायनेमिक्स ऑफ होम्योपैथी. उसमें एक छोटी सी दवाई लिस्टेड है, ग्रेटियोला. आपने सबने शायद उसके बारे में सुना हो. ग्रेटियोला इज a very nice remedy for the GIT problem. Especially ग्रेटियोला is indeed a great remedy for painless diarrhea. painless diarrhea के लिए हम ज्यादातर एसिड फॉस के बारे में बात करते हैं, but I would like to inform you that ग्रेटियोला is equally a beautiful remedy for the painless diarrhea. जिनको लगातार स्टूल होते हो पर स्टूल होने के बाद में कोई तकलीफ नहीं है, या स्टूल करते वक्त कोई तकलीफ नहीं है, इनफैक्ट कोई बहुत ज्यादा वीकनेस भी नहीं आती है, तो ग्रेटियोला उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है. बट दैट इज द यूज ऑफ ग्रेटियोला ओनली ड्यूरिंग GIT. बट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऑल्सो Richard uses has clearly mentioned with many references that जिन लोगों को गले में अचानक से स्पाज्म आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई गला एकदम घोट दिया हो किसी ने और गले में से सांस अंदर बाहर ही नहीं आ पा रही है, ऐसे लोगों को ग्रेटियोला मदर टिंचर थोड़े से गर्म दूध में, he has specifically prescribed about this
मोड ऑफ इंजेक्शन ऑफ ग्रेटियोला, थोड़े से गर्म दूध में ग्रेटियोला मदर टिंचर की आप 8-10 बूंद मिला दीजिए और पेशेंट को पीने के लिए दीजिए। पेशेंट का जो स्पाज्म है वो इमीडिएटली रिलीव हो जाता है, इमीडिएटली। एंड ही हैज नरेटेड दिस सिम्टम with his personal experience, not only with his own experience। रिचर्ड ह्यूजेस की भी एक खास बात थी कि वो जहां भी रेमेडी के बारे में बात करते थे, जहां भी जिस भी रेमेडी के बारे में वो बात कर रहे हैं, तो वहां उन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस ही नहीं बताए, उन्होंने उनके साथ के जो उनके कलीग्स थे, जो उनके कोवर्कर्स थे, सबके एक्सपीरियंस वो इक्वली शेयर करते थे और बताते थे कि किस किस डॉक्टर का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर रेमेडी के लिए। तो कोई भी चीज वहां पे जो लिस्टेड है ना, वो ऑथेंटिसिटी के साथ है, वो वेरिफिकेशन के साथ। तो ग्रेटियोला वो बहुत यूज करते थे ऐसे लोगों में। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी व्हेनेवर यू हैव सच a case where there is severe spasm in throat, just put few drops of Gratiola mother tincture in warm milk and ask patient to sip it like tea। चाय के जैसे वो धीरे धीरे सिप करके पी ले, इमीडिएटली उसका स्पाज्म खुल जाएगा। ये वैसा ही है जैसे हम एमाइल नाइट्रिक यूज करते हैं, अगर किसी को सिवियर कन्वर्जन आ गया, तो अगर आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है तो जस्ट एमाइल नाइट्रिक क्यू को एक आप कॉटन पे स्प्रिंकल करो और पेशेंट को सुंगा दो। ये जूता सुंगाने समान है। जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में बोलते थे ना कि मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जूता सुंगा दो, तो हमारे यहाँ एमाइल नाइट्रिक है, आप उसको कॉटन पे लेके 2-3 बूंद डालो और मरीज के नाक के पास रख दो, इमीडिएटली मरीज उठ के बैठा हो जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली बहुत बार अनुभव किया हुआ है। इवन इन दी एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन, चाहे वो कैसा भी टॉनिक कन्वर्निक क्रोनिक कैसा भी कन्वर्जन हो, just put a few drops of amyl nitric Q and ask patient to inhale, immediately patient उठ के बैठा हो जाता है। तो सेम वे ग्रेटियोला मदर टिंचर काम करता है। अगर आप उसको गर्म दूध में मिला के पेशेंट को सिप करने के लिए देते हो तो इमीडिएटली उसका स्पाज्म खुल जाता है। अगेन दीज ऑल जेम्स आर गिवन इन आवर सोर्स बुक। मैं कोई नई दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ जो रिसेंटली आई हो, बिना प्रूविंग के आई हो, या खाली ख्याली पुलाव बना के हमारी मेडिकल में घुसाई गई हो। मैं ऐसी किसी दवाई के बारे में बात कभी करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन दवाइयों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पिछले 200 साल से हमारे यहाँ लिटरेचर में अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज भी उनको कोई रोशनी नहीं दिखा रहा है। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट एंड वी आर सिंपली रिलाइंग ओनली ऑन either the remedies that we have studied during our BHMS time और those remedies which जो कि आजकल हमारे जो नए नए स्कूल्स चल रहे हैं, वो रोजाना ही नई नई दवाइयां हमारे को लुभा लुभा के देते रहते हैं बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में, तो हम उनको पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो अपना जो ट्रेजर है वो भरा पड़ा है ऐसी बहुत सारी दवाइयों से जिनके बारे में हम आज भी अनभिज्ञ हैं। तो इट इज माई रिक्वेस्ट to use all those remedies। There is one more remedy which I am frequently using again, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा कोविड की दवाइयों के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूँ। साइक्लामेन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। साइक्लामेन इज एक्चुअली पल्सिटिला, हम सब इस बात को जानते हैं। पल्सिटिला के जैसे सिम्टम होते हैं, खाली जो थर्मल मोडेलिटीज है वो जो होती है वो रिवर्स होती है। पल्सिटिला को बंद कमरे में रहना अच्छा नहीं पसंद, साइक्लामेन को खुली हवा में रहना पसंद नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो दोनों के मिलते जुलते हैं। बट जो मैंने अभी इन दिनों साइक्लामेन को यूज किया है वो कोविड में मैंने बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया है। और आप सभी जानते हैं कि कोविड के जो मरीज होते हैं उनमें अब जो नए केसेस आ रहे हैं, शुरू में तो ऐसा नहीं था बट पिछले 2-3 महीने में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर कोविड के मरीज बोलते हैं कि उनको मुंह का स्वाद आना बंद हो गया, उनको नाक से खुशबू आनी बंद हो गई। और कई बार तो मरीज लैब में जाता ही नहीं है, खुद को पहले ही डायग्नोज कर लेता है। इनफैक्ट हमें ही बताता है कि मुझे डॉक्टर साहब कोविड हो गया है। क्यों हो गया भाई कोविड? डॉक्टर साहब मेरे को ना स्मेल नहीं आ रही है और मेरे को मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा है और मुझे 100% कोविड हो गया है। और ये है भी, जब वो टेस्ट में जाते हैं, लैब में जाते हैं तो कई बार उनको पॉजिटिव मिल भी जाता है। तो ये बड़ा कॉमन सा सिम्टम है जो कोविड में पाया जाता है। और ये सिम्टम लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट बहुत सारी दवाइयों में है। फॉस्फोरस में है, पल्सिटिला में है, एक जिंकम फॉस के लिए बहुत लोगों ने बोला था कि इसको यूज करना चाहिए, उसमें भी है। और बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें लॉस ऑफ टेस्ट भी है, लॉस ऑफ स्मेल भी है। बट कुछ सेट ऑफ सिम्टम है कोविड में भी मिलते हैं और जो साइक्लामेन में भी पाए जाते हैं। नाउ ब्यूटी क्या है? हेरिंग, अगेन दिस इज टेकन अप बोरोड फ्रॉम हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। क्यों? क्योंकि हेरिंग गाइडिंग ने या हेरिंग ने कुछ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स लिस्ट किए हैं जो इन सिम्टम के साथ में पाए जाते हैं। जैसे साइक्लामेन को भी ड्राइनेस होता है, गले में सेंसेशन कंस्ट्रिक्शन होता है, सफोकेटिव कॉफ आता है, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग होती है, नाक से बहुत सारा पतला पानी गिरता है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, सूंघना सूंघना आना बंद हो जाता है, जो मुंह का जो स्वाद है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, फ्लैट टेस्ट ऑफ माउथ, रिमेटिक पेन्स इन हेड एंड ईयर्स, कान में माथे में दर्द होता है और पूरे शरीर में ठंड लगती है।
इतनी ठंड लगती है कि वो किसी भी तरह की कवरिंग से वो ठंड मिटती नहीं है, उसकी दूसरा रहता है, शिवरिंग होती रही, जैसे नक्सोमिका या रस्टॉक्स या एपल जिनकी शिवरिंग कम ही नहीं हो पाती है, वैसी सी शिवरिंग साइक्लामेन को भी होती है, पूरा कवर करके रखना पसंद करता है। और पानी की जो प्यास होती है वो हीट के टाइम में नहीं होती है, बट अदरवाइज बाकी टाइम में उसको पानी की प्यास लगती है, पर जिस समय तेज बुखार होता है उस समय उसको प्यास नहीं लगती है। और इसके साथ में एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्कोमिटेंट सिम्टम है जो हेरिंग ने जगह जगह लिस्ट किया है, जहां जहां भी ये सिम्टम लिखे है ना, वहां के सामने थीटा लगा के एक सिम्टम लिख रखा है, इचिंग इन ईयर्स। तो मैंने कई पेशेंट्स में देखा, या जहां जहां मैंने साइक्लामेन यूज करी, वहां पे मैंने ये जरूर कंफर्म किया कि इन सिम्टम के साथ में क्या मरीज को कान में खुजली होती है। ये फिजिकल सिम्टम है छोटा सा, कई बार मरीज बताए भाई, कई बार हो सकता है नहीं भी बताए, नहीं बताएगा तो डेफिनेटली वी विल नॉट बी एबल टू प्रिस्क्राइब cyclamen. But I have pointed out, I have noted out that wherever these kind of set of symptoms are there, along with all these symptoms, along with the loss of smell, along with the loss of taste, if patient complains that he has itching in ear as a concomitant symptom or as a coexisting symptom with all these conditions, then cyclamen is a beautiful remedy. And I have recently treated many cases of COVID with the help of this remedy, और बड़ी जल्दी टेस्ट और स्मेल रीस्टोर होती है, क्योंकि मरीज क्या बड़ा परेशान हो जाता है इस चीज से कि डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है, बुखार भी नहीं आ रहा है, खांसी भी बंद हो गई है, दर्द होना भी बंद हो गया है, वीकनेस भी बेटर फील कर रहा हूँ, खाने पीने की इच्छा भी हो रही है, पर ना मुंह का स्वाद नहीं आ रहा या खुशबू नहीं आ रही मेरे को एकदम भी। ये चीज से मरीज बड़ा परेशान रहता है बड़े बड़े दिनों तक। और मैंने ये बहुत अनुभव किया है कि साइक्लामेन देने के बाद में जो टेस्ट है मुंह का या जो स्मेल है वो बहुत जल्दी रिस्टोर होती है। सो दिस इज दी वन यूज ऑफ साइक्लामेन। अगेन दिस यूज ऑफ साइक्लामेन is directed only by the hearing guiding symptom. It is again not mentioned in many of the mathematicas or even the repertory. तो ये कुछ खास बात है हेरिंग गाइडिंग सिम्टम की, कि जब आप इनको दवाइयों को इस बुक से बार बार पढ़ते हैं तो बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे कॉन्कोमिटेंट सिम्टम आपको नजर आते हैं जो यूजुअली आपको अपनी मेटामेडिका में या रेपर्टरी में देखने को नहीं मिलते हैं। एंड व्हाट इज ब्यूटीफुल अबाउट हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम, दैट मेंटल फिजिकल कॉन्कोमिटेंट्स आर नरेटेड विद सर्टेन क्लिनिकल कंडीशन। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको, कुछ पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये कुछ चीजें हैं जो हमने हमारी मैट्रोमेडिका में नहीं पढ़ी। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात करता हूँ हेडेक के बारे में। बहुत कॉमन दवाई है ऑरम मेटालिकम, हम सब जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द पर्सनैलिटी, अबाउट द physical makeup, about the mental makeup of aurum metallicum, and we all presume it to be a very controlled remedy। aurum के लिए हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही मजबूत दवाई है या बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी है जो सारे इमोशंस को अपने अंदर होल्ड करके रखता है और जल्दी से रिफ्लेक्ट नहीं होने देता, और बड़ा ही अपने आप को कंपोज्ड एंड कंट्रोल्ड फील करवाता है सामने वाले को। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है तो हम औरम की पर्सनालिटी को वैसा ही अनुभव करते हैं, वेरी कंट्रोल्ड and strong personality. But the same aurum metallicum, whenever suffering from headache, he become a different individual. He becomes complaining, he becomes grumbling, शिकायतें करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, चिल्लाना, झल्लाना, ये सारे सिम्टम औरम को डेवलप हो जाते हैं जब भी उसको सर में दर्द होता है। दिस इज नॉट द जनरल बिहेवियर ऑफ aurum metallicum. This is what I am reminding you. This is not the general behavior of aurum metallicum. This complaining and grumbling and irritating attitude of aurum metallicum appears only when he is suffering from headache. Now, this is the beauty of hearing guiding symptom, where the mental situation, mental symptoms are listed or mentioned with a peculiar clinical condition only. They are not being denoted as the general symptoms. Now, exactly reverse situation appears in Bediaga. Bediaga is a very small remedy, जैसे जिसके लिए हम बोलते हैं ना कफ फ्लाई इन फीसेस, या जिन मरीजों को रिमेटिक पेन्स होते हैं, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में ज्यादा होते हैं, उनके लिए हम बेडिया का यूज करते हैं। बट बेडिया का इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर हेडेक ऑल्सो। बट द बेडिया का पेशेंट इज अदरवाइज इरिटेबल। अगर आप उसका मेंटल स्टेट देखेंगे तो बेडिया का पेशेंट इज अदरवाइज इरिटेबल पेशेंट, एंशियस पेशेंट, रेस्टलेस पेशेंट, बट द सेम बेडिया becomes quite active, quite happy, with a clarity of mind, with the activity of mind during headache. Now, exactly the reverse situation of aurum metallicum. So this is the beauty of hearing guiding symptom. When you study remedies with the hearing guiding symptom, you find many such beautiful mental states which are listed with the clinical condition. And when you prescribe on the basis of these concomitant symptoms, especially mental concomitants, वैसे भी जब हम केस एनालिसिस करते हैं हमारा एज पर कैंट क्लासिफिकेशन भी जब हम मेंटल जर्नल्स नोट करते हैं, केस एनालिसिस करते हैं, तो मेंटल कॉन्कोमिटेंट को हम सबसे ऊपर रखते हैं।
क्यों? क्योंकि वो पेक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, उनको हमेशा हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो हेरिंग में ऐसे मेंटल कंकोमिटेंट बिखरे पड़े हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको हजारों की संख्या में मेंटल कंकोमिटेंट मिलेंगे जो पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन के साथ पाए जाते हैं। दिस इज वन एग्जांपल, आई विल गिव यू मेनी एग्जांपल। अभी वी टॉक अबाउट आर्सेनिकम एल्बम, दिस इज अ वेरी कॉमन रेमेडी, और आजकल तो पूरी दुनिया आर्सेनिक के बारे में जानने लग गई, इतनी पॉपुलर रेमेडी है ये। बट हम सब जानते हैं कि आर्सेनिक को जब भी बीमारी होती है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस, एंग्शियस, इरिटेबल, फियर ऑफ डेथ, सबको इकट्ठा कर लेना, परेशान रहना, बेचैन रहना, घबराना, बेचैन होना, छटपटाना, ये सारे सिम्टम आर्सेनिक में पाए जाते हैं जब जब भी वो बीमार पड़ता है, चाहे वो बीमारी छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे उसको सर में दर्द हो रहा हो, कि कोई उसको हेमेटोमेसिस हो, कॉलिक हो, ईडिमा हो, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो, हाइड्रोथोरेक्स हो, कुछ भी हो, ये सिम्टम आर्सेनिक को आते ही आते हैं, क्योंकि वो आर्सेनिक का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैट है। बट वही आर्सेनिकम जब भी उसको इंटरमिटेंट फीवर होता है, जब भी उसको सिर्फ एक कंडीशन में, वही आर्सेनिकम इंटरमिटेंट फीवर होने पर टोटली इंडिफरेंट हो जाता है ना। ये किसी मेटामेडिका में नहीं लिखा है, आपने शायद कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, चाहे आप बोरिक पढ़िए, कैंट के लेक्चर पढ़िए, चाहे आप किसी भी एन एम चौधरी पढ़िए कि डनम पढ़िए, कोई भी मैथमेटिका पढ़िए, कि चाहे आप लिप्पे पढ़िए, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। लेकिन सिर्फ हेरिंग में लिखा है कि जब भी आर्सेनिक को इंटरमिटेंट फीवर होता है, यानी मलेरियल टाइप फीवर होता है, या ऐसा फीवर जिसमें 3 स्टेजेस डिफाइन हो सकती हो, ऐसे फीवर के टाइम में आर्सेनिकम का जो पेशेंट है वो टोटली इंडिफरेंट हो जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। He is indifferent about the surrounding, he is indifferent about his own mental state, he is indifferent about everything, rather he is lying still in a bed। कोई अदरवाइज आर्सेनिक का पेशेंट कभी बेड में स्टिल रह ही नहीं पाता, उसकी पहचान है, जब भी हम देखने जाते हैं तो वो चाहे कमजोरी इतनी होती है कि वो घूम नहीं सकता, पर वो बिस्तर में ही करवटें बदलता रहेगा, छटपटाता रहेगा, लेकिन जब भी उसको इंटरमिटेंट फीवर होता है वो चुपचाप शांत पड़ा रहता है। आपको देख के लगेगा नहीं कि आर्सेनिकम का पेशेंट है, क्योंकि जो हमने आर्सेनिक के बारे में पढ़ा है वो हमेशा हमने यही पढ़ा है कि आर्सेनिक का पेशेंट मतलब बेचैनी, घबराहट, छटपटाहट, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, सारी मैथमेटिका हमें यही पढ़ाती है। लेकिन जब भी आप हेरिंग गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे, वहां से आप मेंटल स्टेट को पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो दैट देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम व्हिच आर अपीयरिंग ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लिनिकल कंडीशन, दे आर नॉट द जनरल सिम्टम ऑफ दैट पेशेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हेरिंग गाइडिंग सिम्टम। तो ये बड़ा ही यूनिक सा सिम्टम है, जो मैंने कई बार अनुभव किया है कि बहुत सारे बुखार के मरीजों को, जिनको मैं आर्सेनिकम दे रहा हूँ, जिनमें सारे सिम्टम आ रहे हैं आर्सेनिक के, जनरल सिम्टम, प्यास आर्सेनिक जैसी है, नाइट एग्रेवेशंस जो हैं वो आर्सेनिक जैसे हैं, थर्मल रिएक्शन आर्सेनिक जैसी है, लेकिन मरीज जो है वो बेचैन नहीं है, मरीज जो है वो छटपटा नहीं रहा है, और उसको बुखार है, तो दे नहीं पाता हूँ आर्सेनिकम। लेकिन जब मैंने हायरिंग गाइडिंग सिम्टम में पढ़ा, जब वहां देखा कि आर्सेनिक के साथ ऐसा भी होता है, ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर द सेम आर्सेनिकम बिकम्स एब्सोल्युटली indifferent to everything। This gave me courage to prescribe arsenicum to the patients who are not even restless and anxious। So that is again the beauty of hearing guiding symptom। Same, there is one very famous remedy, antimonium crudum, जिसके बारे में हमें शुरू से फर्स्ट बीएचएमएस से पढ़ाया जाता है कि एंटीम क्रूड का जो बच्चा होता है वो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है, इरिटेटेबल होता है, किसी के कोई उसकी तरफ देखे तो उसको बर्दाश्त नहीं, वो रोना चालू कर देता है, कोई उसको टच करे तो वो रोना चालू कर देता है, कोई इसकी तरफ ध्यान दे तो उसको रोना चालू हो जाता है, चिड़चिड़ा बच्चा होता है। यही पढ़ाया जाता है हमें शुरू से, पीविश, शल्की, स्नैपिश, इरिटेबल, cannot take up the looks of strangers, get irritated when somebody tries to touch them। This is what we continuously study about our antimonium crudum। but मैंने ये बहुत अनुभव किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको एंटीमोनियम क्रूडम मैं दे रहा हूँ इसी बेसिस के ऊपर, वो ठीक नहीं हो रहे थे, वो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स थे, वो फीवर के पेशेंट्स थे, या कोई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, या हेडेक के पेशेंट थे, जो बच्चे चिड़चिड़े थे व्यवहार में, टच करते से जो इरिटेट हो रहे थे, या कोई उनकी तरफ देख भी रहा था तो भी वो इरिटेट हो रहे थे, तो भी एंटीमोनियम क्रूडम मेरी दी हुई उनको काम नहीं कर रही थी। सो दिस वाज रियली big question for me of using antimonium crudum, but when I studied again with the hearing guiding symptom, I could realize that this behavior of children of antimonium crudum only appears when the baby is suffering from some gastric ailment। it is not a general symptom of antimonium crudum। but unfortunately even एलन ने भी ये गलती की है, एलन भी जब एंटीमोनियम क्रूडम स्टार्ट करता है तो सीधा बच्चे के लिए सीधा वो यही लिखता है, जनरलाइज sulky peevish children cannot take the looks of strangers। सेम कैंड लेक्चर में लिखा हुआ है, सेम बोरिक मैथमेटिका में लिखा हुआ है एंटीमोनियम क्रूडम के बच्चे के बारे में। इवन आप जो
दूसरी किताबें पढ़ते हैं बड़ी बड़ी जिनमें मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा डिफाइंड है, चाहे वो विठोलकस है या फिलिप बैली है या राजन शंकर है, वहां भी एंटीमटूड के बच्चों के लिए यही लिखा है कि इनका ही जनरल बिहेवियर होता है। लेकिन हेरिंग बहुत क्लियरली मार्क करता है कि एंटीमोनियम टूडम बच्चे का ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है प्रूविंग में सिर्फ तब आया है जब बच्चा पेट की कोई परेशानी से ग्रसित होता है, अदर इधर ही सफरिंग फ्रॉम डायरिया or he is suffering from colitis, then only he is presenting this particular set of symptom. Now this is again the specific situation or the beauty of herring symptom, and you don't find such kind of combination anywhere in any of the book. Bovista is a very popular remedy. We know it as a remedy for the skin conditions. We know it as a remedy for female troubles, and we know it a remedy for variety of illness. We are using Bovista. But there is one symptom of Bovista, awkwardness, जिसके लिए हम बहुत बोलते हैं। कहीं भी कोई awkwardness की बात आती है या ऐसे लोग जिनकी आदत होती है कि उनसे कोई भी चीज होल्ड नहीं हो पाती, चलते ही ठोकर खाते हैं या चीजें उनके हाथ से गिर जाती है, होल्ड नहीं कर पाते, तो हम 3 दवाइयों के बारे में सबसे बारे में सोचते हैं। पहले नेट्रिमेराइटिकम, दूसरी एपिस मेलिफिका, तीसरी बोविस्टा। इन 3 दवाइयों के बारे में सोचते हैं सबसे ज्यादा। लेकिन बोविस्टा की ऑकवर्डनेस जनरल सिम्टम नहीं है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम नहीं है। बोविस्टा ऑकवर्डनेस अपीयर्स ओनली व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अर्टिकेरिया और सम स्किन मैनिफेस्टेशन। बहुत क्लियरली मेंशन किया है हेरिंग ने, दिस ऑकवर्डनेस ऑफ Bovista is appearing only when patient is suffering from urticaria, for which Bovista is indeed a very famous remedy. Urticaria by mental excitement, Bovista is the first remedy. तो पर उसकी जो awkwardness है वो तभी आती है जब उसको कोई स्किन डिजीज डेवलप होती है, ये उसका जनरल सिम्टम नहीं है। बोविस्टा के पेशेंट बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करते हैं, बहुत बकवास करते हैं, इरेलेवेंट बातें करते हैं, ट्रुथफुल होते हैं, कोई बात उनके पेट में हजम नहीं होती है, चाहे उससे उस बात को बोलने से चाहे उनका खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन उनको रोक नहीं पाते, वो एकदम अपने आप को रोक नहीं पाते, उनको बोलना ही होता है। और एक और बड़ा इसमें सिम्टम होता है ओविस्टा में कि वो जब आप उनकी आंखों में देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी बात उनके आर पार जा रही है कि नहीं जा रही है, आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि उनके जो लुक्स होते हैं दे आर ऑलवेज वैकेंट, thoughtless staring looks होते हैं। And again these situations, these kind of looks are appearing only when patient is suffering from urticarial or skin affection. Again this is not a general symptom. जबकि इसी सिम्टम के बारे में बात करते हुए अगर आप विठोलकस की मेट्रीमेडिका वीवा पढ़ो, वहां जब उन्होंने बोविस्टा को डिस्क्राइब किया है तो वहां उन्होंने इस सिम्टम के ऊपर करीब एक पूरा पेज लिखा हुआ है। उन्होंने जगह जगह पे लिखा है कि बोविस्टा का मरीज जब आपसे बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपके चारों तरफ देख रहा है, वो आपके ऑरा से बात कर रहा है। उन्होंने इसको इतना जनरलाइज कर दिया है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है और हेनिंग ने बहुत क्लियरली लिखा है कि ये सिम्टम जो बोविस्टा के हैं ये तभी आते हैं बोविस्टा की पर्सनालिटी में जब उनको कोई स्किन डिजीज होती है। दीज आर नॉट द जनरल सिम्टम ऑफ बोविस्टा, सो वी शुड ऑलवेज रिमेन वॉर्न्ड ऑफ दिस थिंग। देयर इज वन वेरी स्मॉल रेमेडी, एंगुस्ट्रा वेरा। एंगुस्ट्रा को हम बहुत सारी कंडीशंस में यूज करते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो, कॉन्ट्रैक्चर्स हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। बहुत क्लिनिकल कंडीशन है जहाँ पे हम एंगुस्ट्रा को यूज करते हैं। बट एंगुस्ट्रा का पेशेंट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, अदरवाइज कोई खास उसके मेंटल सिम्टम नहीं होते हैं, बट जब भी उनको डेंटल कैरीज डेवलप होती है, जब भी उनको दांतों में कैरीज डेवलप हो जाती है, तो एंगुस्ट्रा के पेशेंट इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनको हल्की सी चीज, हल्की सी कोई रिमार्क उनको बर्दाश्त नहीं होता है, एंड दे बिकम एक्सट्रीमली इरिटेबल। The slightest offense, a mere trifle irritates during caries. This is the beautiful sign that you see at many places in hearing symptom, and this denotes that a particular mental symptom is appearing in a particular clinical condition. Now, whenever patient is suffering from caries, and if during that particular time patient becomes extremely irritable, आपको लगेगा कि उसको देख के लगेगा कि ये नक्सोमी का चाहिए इसको या हिपर सेल्फ चाहिए, इतना सेंसिटिव कि जरा सी बात कहते से झल्ला उठता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, एकदम गुस्सैल हो जाता है। बट अगर उसको कैरीज है दांत में तो उसको इमीडिएटली आप एंगुस्ट्राइज दीजिए, उसको नक्स मत दीजिए उस टाइम, उसको कैमोमिला मत दीजिए उस टाइम, उसको हिपरसेल्फ मत दीजिए। अगर उसको डेंटल कैरीज है देन ही रिक्वायर्स एंगुस्ट्रा। क्यों? क्योंकि ये सिम्टम प्रूविंग का है, वे सिम्टम है, ये कोई फॉल्स थ्योरीज पे बेस नहीं है, ये प्रूवर के दिए हुए सिम्टम है जिन्हें रिपीटेडली क्लिनिकली वेरीफाई करके हेरिंग ने इनकॉर्पोरेट किया है। आपकी दवाई इमीडिएटली काम करेगी, ना केवल उसकी कैरीज ठीक होती है, उसकी मेंटल स्टेट भी इमीडिएटली इंप्रूव होती है। This is the beauty when we work with hearing guiding symptom. The slightest offense, a mere trifle irritates him,
ड्यूरिंग डेंटल कैरीज एंगुस्ट्रा इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। एंगुस्ट्रा का एक बहुत बहुत अच्छा सिम्टम होता है, मुझे अचानक से याद आ गया, कॉफी पीने की सबसे ज्यादा डिजायर अगर किसी दवाई को होती है तो एंगुस्ट्रा को हो जाती है। वो रोजाना की 20 22 25 ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, उनको इतना ज्यादा कॉफी की क्रेविंग होती है। दिस इज द रेमेडी विच इज द हाईएस्ट क्रेविंग फॉर कॉफी। एक और दवाई अर्जेंटम मेटालिकम, जो बहुत ही कॉमन दवाई है और हम बहुत कॉमनली गले की प्रॉब्लम के लिए या रोमेटिक पेन्स के लिए, जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए बहुत यूज करते हैं हम अर्जेंटम मेटालिकम को। एंड वी नो अबाउट द अर्जेंटम मेटालिकम, ये पीरियोडिक टेबल के भी बीच भी रॉ में पड़ती है, तो हम इनके लिए मानते हैं कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। अदर अर्जेंटम मेटालिकम के लिए कहा जाता है कि ये इतने अच्छे ओरेटर होते हैं या बोलने के इतने माहिर होते हैं कि अगर आप इनको मिट्टी बेचने भी बाजार भेजोगे तो ये सोने के भाव में मिट्टी बेच के आ जाएंगे, इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं। बट वही, और बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, कभी घबराते नहीं। हालांकि अर्जेंटम का ट्रेट होता है, एंग्जाइटी होती है उनके साथ में, रेस्टलेस रहते हैं, हरीड रहते हैं, बट मेटल भी है साथ में। अर्जेंटम मेटालिकम, नाइट्रिकम होते ही चीजें बिगड़ जाती है, जैसे ही अर्जेंटम नाइट्रिकम होता है चीजें बिगड़नी चालू हो जाती है। बट अर्जेंटम मेटालिकम उसके कंपैरिजन में काफी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल होता है। बट जब भी उनको गले की तकलीफ होती है, जब भी उनको लेरिंजाइटिस होता है, जिसके लिए अर्जेंटम मेटालिकम हम सब जानते हैं सबसे अच्छी दवाई है, बोलने वालों का गला खराब होता हो सबसे अच्छी दवाई हमारे लिए अर्जेंटम मेटालिकम है। बट जब वो इस सिचुएशन में बहुत एंग्शियस हो, लेरिंजाइटिस हो, और साथ में अर्जेंटम बहुत ज्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ के लिए कॉशियस हो गया हो, हर चीज को देखभाल के लेता हो, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो, ठंडा नहीं लूंगा, गर्म नहीं लूंगा, ये ले लूंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा, ये फल खा लूंगा तो मेरा गला ज्यादा खराब हो जाएगा, एसी में बैठ जाऊंगा तो मेरा गला ज्यादा खराब हो जाएगा, अगर ये, जबकि नॉर्मली वो वैसा नहीं होता है, नॉर्मली रूटीन में वो वैसा नहीं होता है, बट जब भी उसको लेरिंजाइटिस होता है तब वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाता है। दिस इज व्हाट अर्जेंटम मेटालिकम इज रिक्वायर्ड व्हेन सच काइंड ऑफ मेंटल स्टेट इज अवेलेबल। सो दिस इज अगेन लिस्टेड ओनली इन हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम। कैक्टस के लिए हम मानते हैं कि बहुत अच्छी दवाई है कार्डियक डिजीज के लिए, और बड़ा ही सीवियर कार्डियक पेन होता है पेशेंट को, इतना सीवियर कि मरीज को लगता है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। बट वही कैक्टस जब भी उसको हार्ट डिजीज होती है, जब भी उसको कार्डियक पेन होता है, इतना सीवियर कार्डियक पेन होते हुए भी उसके चेहरे पे आपको कोई एंजाइटी नजर नहीं आएगी, रादर यू विल फाइंड हिम मोर चीयरफुल इवन विद द cardiac pain, even with the cardiac conditions. It can be of any name of cardiac conditions. The patient is cheerful and vivacious. Mentally, he is more cheerful and vivacious. Then you require cacti. It's not like aconite जिसके चेहरे पे एकदम भय दिखता हो, आर्सेनिक या ब्रायोनिया, जब भी उनको कार्डियक पेन्स होते हैं चेहरे के ऊपर एक चिंता की लकीर साफ नजर आती है, तो हम एकोनाइट के बारे में सोचते हैं, आर्सेनिक के बारे में सोचते हैं, ब्रायनिया के बारे में सोचते हैं, और दवाइयों के बारे में सोचते हैं। बट कैक्टस इज अ रेमेडी व्हेन he is suffering from a cardiac problem, he will become more cheerful and vivacious. Now this is what require cactus, and again this is listed only in hearing guiding symptom. फ्लोरिक एसिड के बारे में हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि फ्लोरिक एसिड का जो इंडिविजुअल है, जो पर्सनालिटी है, वो हाईली अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअल, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सोशल रूल्स रेगुलेशंस वो जानता ही नहीं है, वेगाबॉन्ड इंडिविजुअल, टोटली अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअल, किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं जानना, नहीं मानना उसको। बट वही पेशेंट, क्योंकि डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत सारी चीजों से वो लाइफ में सफर करता है, तो उसको जो बीमारियां होती है वो भी इसी तरीके की होती है। तो वही फ्लोरिक एसिड पेशेंट जब भी उसको एसाइटिस डेवलप होता है, whenever he is developing ascites, only during that situation he become very weak, very depressive and very ill humored, only during when he is suffering from ascites. This is again not the general symptom of fluoric acid, otherwise you will find it absolutely careless individual, वो अपने लिए भी कंसर्न नहीं होता है बहुत ज्यादा, इतना ही बेबाक और बहुत ही अनकंट्रोल इंडिविजुअल है कि वो अपने लिए भी कंसर्न नहीं होता। बट जब भी उसको एसाइटिस डेवलप होता है आउट ऑफ एनी, चाहे वो सिरोसिस के साथ डेवलप हो रहा हो या चाहे कोई और क्लिनिकल कंडीशन के साथ एसोसिएटेड हो, बट जब भी उसको एसाइटिस डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, एंड ही बिकम हाईली इल ह्यूमर्ड, एंड देन यू रिक्वायर फ्लोरिक एसिड। कुरारा इज ए वेरी नाइस रेमेडी। कुरारे अगेन अगर आप इसको हेयरिंग गाइडिंग से पढ़ते हैं, वैसे कुरारे के लिए बोरिक में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और भी दवाइयां कुरारे के लिए बोलती है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम फ्रॉम कुरारे, यू विल फाइंड दिस इज लाइक ए नर्वस टॉनिक। जैसे बहुत सारे मरीजों को मैं कुरारे यूज करता हूँ, स्पेशली जो डिमेंशिया के केसेस होते हैं, जहाँ पे मरीज कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, सोचने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, बात करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है, हर चीज में जहाँ थकान ही थकान लगती है, और साथ में अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में क्यूरारा इज लाइक ए टॉनिक। इट ब्रिंग बैक द वाइटलिटी,
It brings the patients on the more positive level. जैसे एलोपैथिक में बहुत सारे लोगों को ऐसी स्टेट में न्यूरोबियन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शन न्यूरोबियन के इंजेक्शन देना या न्यूरोबियन ओरली देना बहुत ही कॉमन प्रिस्क्रिप्शन होता है एलोपैथी में। वैसे ही अवर होम्योपैथी इज क्यूरारे, हमारे यहाँ क्यूरारे इज एक्टिंग लाइक ए न्यूरोबियन। अगर आप क्यूरारे को आप स्पेशली मेंटल डिजीजेज में, नर्वस डेबिलिटी, डिमेंशिया या अल्जाइमर, ऐसी जो सिचुएशन होती है, इनमें अगर आप कुरारे यूज करते हो तो पेशेंट इज मच मोर पॉजिटिव, much more active in comparison to the earlier state. This is again the use of curare listed only in hearing guiding symptom. Colocin बहुत कॉमन दवाई है, हम सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सब मोडेलिटी क्या क्या काम में आती है सब जानते हैं बहुत अच्छे से। पेट के दर्द के लिए कह लें, एशियाटिक पेन के लिए कह लें, कोलोसिन इज ए वंडरफुल रेमेडी, शॉर्ट एंड स्मॉल एक्टिंग रेमेडी, इमीडिएटली असर करती है। बट वही कोलोसिन जब भी उसको हेडेक, ज्यादातर टाइम में मोडेलिटी कोलोसिन की क्या है, पेट में दर्द होता है तो दोहरा हो जाता है, अगर पैर में शियाटिक पेन है तो पैर को मोड़ के रख लेगा, पेट के ऊपर चढ़ा लेगा। लेकिन जब भी उसको हेडेक होता है, जब भी कोलोसिन को हेडेक होता है, और बहुत सारे मरीज आपको बोलते हैं जाते हैं, मुझे भी अनुभव किया है मैंने भी इस चीज को, कि जब भी उनको हेडेक होता है पेशेंट आके बोलता है जब भी सर में दर्द होता है मेरा मन करता है मैं कमरे में चक्कर काटूं, मेरे को टिकाव नहीं आता, मैं कमरे में चक्कर काटता रहता हूँ बस। तेज दर्द होता है, जैसे मेरे को सर में दर्द तेज होता है मैं टिक नहीं पाता और मैं कमरे में चक्कर काटता रहता हूँ। वॉक्स अबाउट द रूम इन ग्रेट एंग्जाइटी along with headache. Now, this is the peculiarity of colocin, again listed in hearing guiding symptom, nowhere else. ऐसे ही एक और दवाई है क्रॉकस सेटाइवा। क्रॉकस के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, कैसी पर्सनैलिटी है, कैसा मेंटल स्टेट है, बहुत ही हैप्पी एंड मेरीमेंट पर्सनैलिटी है, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, उसकी आदत में होता है लोगों को हक करना, किस करना, मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, ये उसका जनरल ट्रैट है क्रॉकस सेटाइवा का। बट जब भी उसको एपिस्टेक्सिस होता है, और एपिस्टेक्सिस के लिए हम क्रोकस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बट आप अगली बार जब भी यूज करें तो ध्यान दें उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, एंड यू विल फाइंड इफ इट इज ए क्रोकस रिक्वायरिंग एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस के लिए 100 और दवाइयां भी है हमारे पास, हर किसी को क्रोकस नहीं चाहिए होती है, बट अगर वो क्रोकस का केस है और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि वही क्रोकस जो जनरली बहुत ही चेयरफुल है, बहुत ही मेरीमेंट है, बहुत ही हैप्पी इंडिविजुअल है, जैसे ही उसको एपिस्टेक्सिस होता है, he is greatly concerned about his life, believes that he will die, is no longer fit for business. This appears only when patient is suffering from epistaxis. And if that situation you are using crocus sativus, your result or the effect of remedy would be much quicker in comparison to you do in the older way. Podophyllum sub is a common remedy, we all know about this, but again podophyllum का भी जो एक mental symptom है वो सिर्फ fever में develop होता है, और वो है लोकेसिटी। बहुत सारी माएँ आके बोलती है कि वैसे मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बोलता है, बहुत ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, बट जब भी इसको बुखार होता है ये बहुत ज्यादा बातें करने लगे, जरूरत से ज्यादा बातें करने लग जाता है। इट्स नॉट डिलीरियम, इट्स नॉट डिलीरियम दैट वी सी इन द बेलोना और स्ट्रेमोनियम और हायोसियम, इट्स नॉट लाइक दैट। और कोई अनवियर्ड सेंसेशन जो हम बैप्टीशिया में देखते हैं, फॉस्फोरस में देखते हैं या आर्निका में देखते हैं, वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये फीवर के टाइम में ज्यादा बोलता है, बातें ज्यादा करने लग जाता है। तो पोडोफाइलम इज अ वेरी nice remedy for the highly loquacious people during fever. Again, this is listed in hearing guiding symptom only. Then there are many beautiful small remedies जिनको अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इनमें जो सिम्टम्स होते हैं इट्स लाइक आवर पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। जैसे एक दवाई है एलेट्रिस फेरिनोसा। एलेट्रिस को हम लोग ये जो मिसकैरिजेज होते हैं, हैबिचुअल मिसकैरिजेज में बहुत यूज करते हैं, या जो यूट्राइन प्रोलैप्स होते हैं डेबिलिटी की वजह से, वहां पे हम एलेट्रिस को बहुत यूज करते हैं। बट एलेट्रिस इज ए वेरी गुड टॉनिक स्पेशली आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज, जहां हम ज्यादातर टाइम चाइना को यूज करते हैं। कोई भी हमारे पास जब हिस्ट्री आती है कि ब्लीडिंग की हिस्ट्री है या लॉस ऑफ फ्लूइड की हिस्ट्री है या नौसिया वोमिटिंग की हिस्ट्री है, तो हम इमीडिएटली चाइना के बारे में सोचते हैं उस कमजोरी को दूर करने के लिए। बट एलेट्रिस इज इक्वली ए गुड रेमेडी for the debility after exhausting diseases. Electric is a very nice remedy. Same way, another remedy is hippozenum, which is a beautiful remedy for the ulceration of nasal septum. जिन लोगों को भी क्रॉनिक जुकाम रहता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम with the use of remedies, with the use of various therapeutic modes, and which are not effective, the septums get ulcerated. And first remedy that we think about is fluoric acid. But fluoric acid की जगह you can try hippozenum. This is clinically confirmed, verified. Even I have used in my practice for the ulceration of nasal septum, which are the sequelae of chronic sinusitis or the chronic
राइनाइटिस के बाद में जो डेवलप हो जाता है अल्सरेशन ऑफ सेप्टम, उसके लिए हिपोजिनम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। सेम वे पॉलीपोरस इज अगेन ए वेरी स्मॉल रेमेडी, एंड पॉलीपोरस का जो कॉन्स्टिपेशन है इट इज एग्जैक्टली लाइक ब्रायोनिया। जैसे ब्रायोनिया में ड्राई हार्ड स्टूल होता है हेडेक के साथ में, वैसा ही स्टूल पॉलीपोरस को भी होता है। ऑल्दो ब्रायोनिया के लिए आपको बहुत सारी चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारे जनरल सिम्टम देखने पड़ेंगे, पानी की प्यास है कि नहीं है, ड्राइनेस है कि नहीं है, लेकिन पॉलीपोरस का सिर्फ एक ही सिम्टम है। और बहुत सारे मरीज ऐसा बोलते हैं कि उनको ड्राई हार्ड स्टूल होता है और उसके साथ उनको सर में दर्द रहता है। पॉलीपोरस इज ए वेरी नाइस रेमेडी फॉर सच इंडिविजुअल्स। अगेन देयर इज वन मोर रेमेडी, एनेंथेरम। एनेंथेरम इज ए वेरी नाइस रेमेडी फॉर टूथेक फ्रॉम टेकिंग एनीथिंग कोल्ड और कॉफी। इग्नेशिया में जैसे होता है कॉफी पीते से ही दांत में दर्द होना चालू हो जाता है, वैसा ही एग्जैक्टली एनेंथेरम को भी होता है। तो वेर एवर यू फील दैट इग्नेशिया इज इंडिकेटेड बट नॉट वर्किंग, you can try your hands on enantherum. Elaterium is a very nice remedy for the urticaria during intermittent fever, which is a symptom of ignatia. ये इंटरमिटेंट फीवर के दौरान जो अर्टिकेरिया होता है उसकी पहली दवा इग्नेशिया होती है। बट इफ इग्नेशिया इज नॉट प्रॉपरली इंडिकेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फिटिंग, यू कैन ट्राई इलेटेरियम, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू ए लॉट। अर्टिकेरिया ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर। गुआरना इज ए वेरी स्मॉल रेमेडी, आंखों की ट्रबल में भी हम यूज करते हैं गुआरना को, पर जिनको भी कॉफी पीने के बाद सर में दर्द होता है, अगेन वी थिंक ऑफ इग्नेशिया। जो भी लोग बोलते हैं कि कॉफी पीने के बाद में हमको सर दर्द हो गया, तो फर्स्ट वी थिंक ऑफ इग्नेशिया। बट इफ नेक्स्ट टाइम you have such kind of patient where the headache is developing after drinking coffee, you can think of guarna. So there are many such remedies which are though very small, and all these remedies are taken from the herring guiding symptom only, not from anywhere else, only from the herring guiding symptom, which are having the reflection or the symptoms of common remedy, जस्ट कॉमन। कोर्नस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। बहुत सारे लोग जो नक्स की तरह से बोलते हैं ना कि सुबह सुबह जो है मोशन क्लियर नहीं होता है, सुबह का टाइम जो है बड़ा मुश्किल से निकलता है, क्योंकि उनका जो पूरा टाइम है वो अंदर बाहर ही होता रहता है, इनफेक्चुअल अर्जिंग होती है स्टूल की, जाते हैं थोड़ा स्टूल पास होता है फिर वापस आ जाते हैं, जाते हैं थोड़ा स्टूल पास होता है फिर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सुबह सुबह 3-4 बार उनको जाना ही पड़ता है। फॉर सच पेशेंट कॉर्नस इज ए वेरी नाइस रेमेडी इफ नक्स vomica इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली फिटिंग, क्योंकि नक्स ओमेगा के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम देखने को पड़ेंगे, उसके बिना नक्स ओमेगा नहीं काम करेगी। बट कॉर्नस बहुत छोटी सी दवाई है, कोई इसके स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स नहीं होते हैं। बट जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, फ्रिक्वेंट एंड इनफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल इन मॉर्निंग, नक्स ओमेगा इज ए वेरी नाइस रेमेडी फॉर सच पेशेंट। लाइकोपोडियम का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है रेड सेडिमेंट इन यूरिन। हम लोग सब जब भी रेनल कैरिकुलाई का केस ट्रीट करते हैं तो हम सब जानते हैं कि लाइकोपोडियम हम ज्यादातर टाइम इसी बेस के ऊपर प्रिस्क्राइब करते हैं, रेड सेडिमेंट इन द यूरिन। Again, the similar symptom is found in the perisquad. Perisquad is a very nice remedy for people who are having red sediment in urine. So next time, if it is lycopodium indicated, not working, you can think of perisquatrifolia, which is a very good remedy for the pain in eyes also. Pain in eyes also. जिनको भी लगता है ना आंखों में लगता है जैसे आंखों की मसल्स को पीछे से पकड़े किसी ने खींच लिया, इतना सीवियर पेन होता है आंखों में कि ऐसा लगता है कि आंखों की मसल्स को या आई बॉल को पूरी को कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है, इतना तेज पेन होता है। एक डोज आप पेरिस्क्वाड की दीजिए आप 30 या 200 की, इमीडिएटली रिलीफ होता है। मैंने बहुत सारे केसेस में अनुभव किया हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको अगर हम पढ़ें ध्यान से, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम के अंदर जाके देखें, यू विल फाइंड देयर आर मेनी सच रेमेडीज व्हिच कैन बी वेरी हेल्पफुल इन प्रैक्टिस। निकोलम नक्स का एक बड़ा क्लासिकल सिम्टम होता है जिसके बेसिस पे हम नक्स ओमिका को ज्यादा टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं कि सुबह के टाइम नाक बहता रहता है और रात को जैसे ही बच्चा सोता है नाक बंद हो जाती है। बड़ा ही कॉमन सा सिम्टम है। ठंड के टाइम में बच्चा नंगे पैर चल दिया, फर्श पे चल दिया, जुकाम लग गई, नाक बहना चालू हो गई, दिन में नाक बहती रहती है, जैसे ही बच्चा रात को सोता है नाक एकदम पूरी बंद हो जाती है। हम ज्यादातर टाइम ऐसे केसेस में नक्स ओमिका देते हैं। नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई निकोलम, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। निकोलम में एग्जैक्टली सेम सिम्टम होते हैं। द पेशेंट nose is running all day and the mouth opens up and the nose blocks in the night. Exactly same symptom होते हैं और बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत आपको हेल्प करेगी इस तरह की सिचुएशन में। ऐसे ही आर्सेनिकम मेटालिकम का एग्जैक्टली वही मोडेलिटी जो रस्टॉक्स में होती है। जैसे रस्टॉक्स में होता है ना कि फर्स्ट मोशन एग्रेवेट एंड द नेक्स्ट मोशन एमिलियोरेट, सेम मोडेलिटी इज देयर इन आर्सेनिकम मेटालिकम। लंबेगो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द में हो या कंधों के बीच का दर्द हो या पैरों में जनरल दर्द हो, कमर का दर्द हो, पूरी बॉडी का दर्द हो, कंधों का दर्द हो या पैरों में, हाथों में, कहीं भी दर्द हो रहा हो, अगर फर्स्ट मोशन एग्रेवेट करता है और नेक्स्ट मोशन रिलीव करता है, वर्स इन मॉर्निंग एंड फर्स्ट मोशन, बेटर बाय द कंटिन्यूड मोशन और इन द डे टाइम, again you can use arsenicum metallicum
It's not Arsenicum album, it is Arsenicum metallicum, which is a very nice remedy for such kind of situation. Same modality radium ब्रोम में भी होती है. Radium ब्रोम का भी जो patient होता है, उसको भी first motion aggravate करता है और second motion ameliorate करता है. बट रेडियम ब्रोमाइड में जो मेनली प्रॉब्लम होती है वो कमर से रिलेटेड होती है. रेडियम ब्रोमाइड का ये जनरल सिम्टम नहीं है. इट अपीयर्स ओनली विद द बैक एक, नॉट विद द पेन इन शोल्डर, नॉट विद द पेन ऑफ extremities. But in Arsenicum metallicum, like rust talks, it is a general modality of Arsenicum metallicum. First motion aggravate, continued motion ameliorate. एग्जैक्टली सेम इरप्शन जैसे हम रस्टॉक्स में देखते हैं, जो टिपिकल वेजिकुलर इरप्शन जो होते हैं, पानी के दाने बन जाते हैं, बहुत तेज खुजली आती है, रात को बढ़ जाती है, वैसे सिम्टम में आप सबसे पहले रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब करते हैं. बट वायोला ट्राइकलर इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर सच वेजिकुलर इरप्शन विच आर बर्निंग and which are having violent itching and which is worse in night. So there are many such remedies. मतलब मेरे पास पूरी कहानी है इन सब के लिए. इतनी दवाइयां हैं हेरिंग गाइडिंग सिम्टम पे जिन पे हम बात करें तो एक पूरा दिन निकल जाए. बट सिंस द टाइम इज लिमिटेड, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट और हाउ मच मोर आई कैन टॉक अबाउट these remedies, because the presentation is quite long, so I don't know how much time I'm left with. Do I have any answer how much time I can speak more? Yes, sir. Yes. Okay, fine, thank you. So same way there is many more remedies which are having the exact similar symptom that we see in the many polycrest remedy. Many polycrest remedies are having these kind of. Daphne indica is a very nice remedy for the wandering pain. जैसा पेन हम कॉल्चुकम में देखते हैं या पल्सिटिला में देखते हैं या कालीबाइक्रोम में देखते हैं कि जो पेन होता है वो माइग्रेट करता है वन जॉइंट टू अनदर, वन जॉइंट टू अनदर. For those people, Daphne indica is a very nice remedy. Rheumatic pains, wandering, erratic, टिकते नहीं उनको पेन, जगह जगह होते रहते हैं, जगह जगह होते रहते हैं. और डेफिनेट इंडिका एक और बड़ा अच्छा क्लिनिकल रूल है जिसमें आपको बड़ा हेल्प करती है डेफिनेट इंडिका. ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जैसे किसी दिन आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर करी और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है. कभी कभी होता है ना कि वैसे तो बोलते हैं कि नींद आने के लिए आदमी को थकना चाहिए, अगर आप थके हुए हों तो आपको नींद अच्छी आती है. पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं और उस थकान की वजह से कई बार आपको नींद नहीं आती, तो डेफिनेट इंडिका बहुत अच्छी दवाई है ऐसे पेशेंट के लिए हु आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस विच डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फिजिकल सर आपका लेबर. आवाज नहीं आ रहा है. मेरा आवाज नहीं आ रहा है? एम आई म्यूट? No, Yes, sir, sir. it's audible. No, sir, it's Okay now? okay. Sir, it's clearly audible. Okay, fine. Clearly audible. So Daphne indica is a remedy for such people who are having muscular soreness because of excessive labor, and because of that they are not able to take a good sleep. Same way आइपोमिया के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो, बहुत अच्छी दवाई है. आइपोमिया has exactly the same symptom that we see in the Barbaris vulgaris, and it is a very good substitute of Barbaris vulgaris. Severe pain in left kidney with paroxysm running along ureter bulb. Exactly लंबर रीजन से उनको पेन चालू होता है, आगे की तरफ आता है और पीछे नीचे जेनाइटल्स तक आता है. जो सेम कोर्स ऑफ पेन हम उसमें देखते हैं बर्बेरिस वल्गेरी में, वैसा ही पेन आइपोमिया में को भी होता है और साथ में उनको नौशिया जरूर होता है. Hypomia is a very nice remedy with the renal pain along with nausea. Beautiful remedy for that situation. और हम तो बहुत frequently use करते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने renal calculi पे किए हैं. And Hypomia has really produced very nice result for renal calculi pain. Pereira brava के लिए we all know. Cobaltum is also a very nice remedy. Exactly, it has the same modality like we have Restox, but again it is limited to back only. It's not as general that we see in the Arsenicum metallicum. Arsenicum metallicum में वो जनरल सिम्टम है, वहां पे हर तरह का पेन वर्स होता है मॉर्निंग में या फर्स्ट मोशन से, रिलीव होता है मूवमेंट के साथ में. बट कोबाल्टम को इट इज अगेन फॉर द बैक एक, लाइक रेडियम ब्रोम. रेडियम ब्रोम इज ऑल्सो फॉर द बैक एक विच इज वर्स बाई फर्स्ट मोशन एंड बेटर बाई द कंटिन्यूड मोशन. ऐसे ही जो मैं आपसे बात कर रहा था मेंटल कॉन्कमिटेंट की, देयर इज वन फेमस रेमेडी आर्निका मोंटाना. वी नो अबाउट दिस रेमेडी एंड वी यूज एवरी डे. कोई भी दिन ऐसा जब नहीं जाता है जब हम इस दवाई को यूज नहीं करते हो. तो इसके लिए बड़ा बोला जाता है कि आर्सेनिक आर्निका मोंटाना की एक मेंटल स्टेट है जिसके लिए बोला जाता है कि इनको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये हर स्टेट में एकदम अपराइट और टाइट रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम है। आप कभी भी आर्निका से बात करो तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज अनयूजुअल विद मी, नथिंग इज रॉन्ग विद मी। एंड इस सिम्टम के ऊपर, कैन यू बिलीव कि इस सिम्टम के ऊपर जो प्रूविंग में डेवलप हुआ, जहां पे आर्निका ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, इस सिम्टम के ऊपर लंबी लंबी कहानियां डेवलप हो गई है। चाहे आप सोल ऑफ रेमेडीज पढ़ लीजिए, चाहे आप असेंसेस ऑफ मैथमेटिकल विथोल्कस पढ़ लीजिए, सिर्फ इस एक सिम्टम के ऊपर जो हेरिंग से उधार लिया गया था, और उस एक सिम्टम के ऊपर पूरी लंबी कहानी बना दी कि आर्निका तो जैसे कोई मिलिट्री का जनरल है या मिलिट्री का कर्नल है, जिसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमेशा स्ट्रांग रहता है, हमेशा मजबूत बन के खड़ा रहता है, ऐसा होता है आर्निका का पेशेंट। लेकिन अगर आप हेरिंग राइडिंग सिम्टम में जाके देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे कभी मिला नहीं है ऐसा आर्निका, मुझे कभी ऐसा आर्निका नहीं मिला जो ये बोले कि मैं तो हर सिचुएशन में एकदम, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ, ऐसा मुझे आर्निका कभी मिला ही नहीं। बट अगर आप हेरिंग राइडिंग सिम्टम खोल के देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि आर्निका का ये सिम्टम सिर्फ तब डेवलप हुआ था जब आर्निका को कोई इन्फेक्शियस फीवर हुआ था, सेप्टिक फीवर। ओनली विद दैट सिचुएशन इट appeared. It is not a general state of arnica which is being presumed, which is being grown up like a story that arnica is like a military general, arnica is like a military colonel who always says that there is nothing the matter with me, I am perfectly all right, upright, tight individual, strong individual. While this mental strength of arnica is visible only when he is suffering from septic fever. So this is the beauty of hearing guiding symptom. एकोनाइट के लिए बोलते हैं कि एकोनाइट फियर उसका एक जनरल फिनोमिना है। अगर आप हेरिंग गाइडिंग सिम्टम को देखें तो ऑफ कोर्स ही टॉक्स अबाउट द फियर ऑफ एकोनाइट, ही टॉक्स अबाउट द मेंटल स्टेट ऑफ एकोनाइट, बट जो स्टेट हमें पढ़ाई जाती है एकोनाइट की, कि लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल, जो पैनिक हमें एकोनाइट का दिखाया जाता है लेक्चर्स में, वीडियोस में, या जो हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं कि लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल, काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, जो चेहरे की जो आकृति है ना वो भय को बयान करती है। ऐसा लगता है कि मरीज कितना परेशान है, कितना अंदर से व्यथित है, भीड़ में नहीं जा सकता, लाइफ उसके लिए एक बर्डनसम हो गई है। ये स्टेट एकोनाइट की सिर्फ प्रेगनेंसी में आती है। It is again and not a general or casual phenomena of aconite. Herrings talk about fears of aconite. He says that aconite has fear of death. Aconite is a fearful individual. भय उसके साथ चलता है, पर जो इंटेंसिटी दिखाई जाती है हमें मैथमेटिका में, वो इंटेंसिटी सिर्फ तब मिलती है जब पेशेंट या तो प्रेगनेंसी में हो, या फिर टॉक अबाउट डेथ इन चाइल्ड बेड। यानी जो ये सिम्टम है एकोनाइट में अपीयर हुए हैं, प्रूविंग के टाइम जो अपीयर, क्योंकि हेरिंग बात करता है सिर्फ उन सिम्टम की जो प्रूविंग में आए और क्लिनिकली वेरीफाइड हुए, प्रूविंग में आए और क्लिनिकली वेरीफाइड हुए। कोई कहानियां बना के बात नहीं करते, वहां पे सिंपल सिंपल सिम्टम लिखे हुए हैं और सिम्टम सिंपल उनके आगे क्लिनिकल कंडीशन लिखी हुई है। कोई कहानियां नहीं लिखी हुई है, कोई स्टोरीज नहीं लिखी हुई है। लेकिन ये सिम्टम तभी आए थे इस एकोनाइट के पेशेंट्स को व्हेन दे वर डेवलपिंग, व्हेन दे वर हैविंग प्रेगनेंसी। Only that time these kind of mental state of aconite is coming. एपोसाइनम हम बहुत यूज करते हैं रीनल फेलियर के लिए, ड्रॉप्सी के लिए, बहुत फेमस दवाई है। बट अगेन देयर इज ए मेंटल कॉन्कोमिटेंट ऑफ एनकोमिराइन, ही बिकम्स लो स्पिरिटेड एंड नर्वस, स्पेशली व्हेन ही इज सफरिंग फ्रॉम एसाइटिस एंड क्रॉनिक डायरिया। Aurum metallicum के लिए again, as I earlier also told, that they have a disposition to commit suicide. And again, this kind of disposition of aurum metallicum majorly comes when they are suffering from certain clinical conditions. Like if you see from the hearing guiding symptom, looks on the dark side, weeps, prays, thinks she is not fit for this world, longs for death, strong inclination to commit suicide, desperate, desires to jump from a height, with prolapse of or induration of uterus or pregnancy. Again, these set of symptoms, that typical climactic part of the extreme state of aurum metallicum is appearing when the lady is either having the prolapse of uterus or she is having pregnancy. Only that time those kind of mental states are appearing. Calcarea carb is a very famous remedy, a deep acting constitutional remedy, and whenever they are suffering from coryza, बहुत छोटी सी बात है, जुकाम जब भी होता है या जुकाम खांसी जब भी कैलकेरिया कार्ब को होती है, तो दे डेवलप ए डिसइंक्लिनेशन फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क। दे ऑल्दो दे आर लेथार्जिक, हम जानते हैं कि कैलकेरिया का जो इंडिविजुअल है वो लेथार्जिक होता है, इंडोलेंट होता है, ज्यादा मूवमेंट करना उसको पसंद नहीं होता है, बट स्टिल whenever they are suffering from coryza or if they are victim of addiction, they become totally disinclined to any kind of work,
They do not like to work at all. This is the state of calcarea cough. Same way measarium, जिसको हम variety of illness के लिए use करते हैं, and one very common use of measarium is prosopagnosia, जो चेहरा का facial pain जो होता है उसके लिए measarium बहुत ही अच्छी दवाई है. But if you note about the mental state of measarium during prosopagnosia, there is he will be a victim of very weak memory and debility. जब भी उनको चेहरे में दर्द होता है, जब भी उनको चेहरे में तेज दर्द होता है, प्रोसोपैल्जिया जब भी डेवलप होता है तो उनकी मेमोरी वीक हो जाती है, वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं, वीकनेस फील करते हैं, डेबिलिटी फील करते हैं, एंड देयर मेमोरी बिकम्स पुअर. If this mental concomitant fits with the prosopagnosia, then the only remedy would be Mesarium. And if you prescribe in this way, if you prescribe, your results would be much more imminent, much more clearer, and much more quicker. Apis mellifica is also a very good remedy for the prosopagnosia with the impaired memory, but you won't find that much of debility that you see in the Mesarium. There is impairness of memory, but that debility part will be missing, while in Mesarium, weakness is also there and loss of memory is also there. And another situation for which we know about Apis mellifica is a remedy for those shrill cries that occurs during the sleep, those shrill screams, piercing screams that occurs during the sleep, which is indicative of tubercular meningitis. जब भी बच्चों को tubercular meningitis होता है तो बच्चों का अचानक से ब्रेन में प्रेशर बढ़ जाता है और वो रात के टाइम बहुत जोर से चिल्लाते हैं, बहुत जोर से तीखा चिल्लाते हैं. और जब भी सिम्टम अपीयर होता है, if it is concomitant with sopor interrupted by piercing sleep in tubercular meningitis, then Apis mellifica is a beautiful remedy. Same way, abrotenum is a remedy for the cross child, for the ugly child, for the child who are very bad-tempered child, you can say. But again, this temper of abrotenum, although abrotenum के लिए generally हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये बहुत ही बुरे स्वभाव के बच्चे होते हैं, बहुत ही गंदे स्वभाव के बच्चे होते हैं. इतना गंदा स्वभाव होता है कि कई ऑथर्स ने abrotenum के लिए लिखा है कि ये इतने क्रूवेल बच्चे होते हैं कि ये कॉकरोच तक को खा जाते हैं. कई ऑथर्स ने ऐसा मेंशन किया है कि अगर कॉकरोच जिंदा चल रहा है तो अब्रोटेनम उसको मार देगा, मार के उसको खा जाएगा. इतने वो क्रूवेल होते हैं, निर्दयी बच्चे होते हैं. बट दिस क्रूवेलिटी ऑफ एब्रोटेनम, दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ एब्रोटेनम appears when baby is suffering from marasmus only, for which abrotenum is indeed a very nice remedy, but only during marasmus, not about the when abrotenum is suffering from the metastatic disorder like the rheumatic pains, or when where the complaints are alternating from one situation to another. That is not a state where you will find abrotenum child a very cross and ugly kind of. Only when they are suffering from marasmus, and only this child become cross and depressed. And then there is one more remedy, Arania diadema, is body remedy. And again, these remedies are having a very bad attitude, a very sad attitude of mind, morose and despondent, longing for death, and sleeplessness, along with intermittent fever. Although we know about this remedy, which are very sensitivity जो इनकी है डेंथ वेदर के लिए, इसके लिए हम एरिनिया डायडेमा को यूज करते हैं. बट फीवर में एरिनिया डायडेमा अगर आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली intermittent fever, then look for the mental state, morose and despondent, longing for death, and sleeplessness during intermittent fever. This will really lead you to think about Arenia diadema. So there are many such remedies which we can talk. Cyclamen I already talked about, and there is one more remedy, Robenia, which we use frequently for the hyperacidity. जिनको भी पूरे इस अपर जीआई ट्रैक में जलन होती है, खट्टाई आती है, खट्टा मुंह में पानी आता है, इतना खट्टा आता है कि दांत पूरे खट्टे हो जाते हैं, तो हम रोबिनिया बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं. बट अगर पेशेंट बहुत ही लो स्पिरिटेड है और बड़ा ही इरिटेबल है, इंडाइजेशन के साथ, एसिड पेप्टिक डिजीज के साथ, एसिडिटी के साथ में, अगर पेशेंट का spirit level बहुत लो है, very low spiritive, sad and depressed patient with excessive irritability, then Rubenia would be much quicker to act. मेरे कहने का जो लॉजिक है वो सिर्फ इतना ही है, अगर आप मेंटल कॉन्कोमिटेंट को ध्यान में रखते हुए किसी फिजिकल कंडीशन के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिस्क्रिप्शन. The result would be much quicker than whatever you have been doing earlier in your practice. And this all we learn when we are using our knowledge, or when we are basing our knowledge of Mathematica only on hearing guiding symptom. And this kind of symptomatology, this kind of presentation of symptom is given only in hearing guiding symptom. So this is what really I wanted to talk about in this small amount of time. Although this work is quite long, and I always appeal to my all fellow colleagues to
pick up the projects on hearing guiding symptom, क्योंकि खाली दवाइयों की ही बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, बहुत सारी गलतियां बुक में भी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक दवाई है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम, इसको हम मेजरली राइट साइड में यूज करते हैं। अगर आप रेपर्टरी में भी देखेंगे कि रेमेडीज राइट साइड एस्कुलस मिलेगी आपको, वहां पे राइट में ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलेगी, लेफ्ट में कम प्रोमिनेंटली मिलेगी। मैथमेटिका में देखेंगे एस्कुलस इज डिनोटेड एज द राइट साइड, वाइल अगर आप हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम खोल के देखेंगे तो ज्यादातर सिम्टम जो क्लिनिकली वेरीफाइड है वो लेफ्ट साइड के। अब गलती कहाँ हुई? गलती हो गई कि जब हेयरिंग ने लास्ट में समअप किया, जब ये गलती हेयरिंग से खुद से हुई है, जब हेयरिंग ने लास्ट में एस्कुलस को समअप किया जहां पे वो साइड टाइम एंड मोडेलिटी की अलग से बात करता है, तो वहां उन्होंने गलती से एस्कुलस को राइट साइड में प्लेस कर दिया, और हमारे बाद के जितने भी रेपर्टरी बनाने वाले थे उन्होंने वहीं से एस्कुलस को उठा लिया और सब ने उसको राइट साइड में डाल दिया। लेकिन अगर आप ऊपर लिटरेचर देखें, अगर आप सिम्टम्स देखें, अगर आप वेरिफिकेशंस देखें हेयरिंग के, तो आपको नजर आएगा कि एस्कुलस इज मोर ए लेफ्ट साइडेड रेमेडी। लेकिन चूंकि गलती खुद हेयरिंग से हो गई थी तो वो गलती आगे तक कैरी फॉरवर्ड हो गई। तो मैं बार बार अपने कलीग से, अपने साथ वालों से अपील करता हूँ कि हेयरिंग के ऊपर आप प्रोजेक्ट लीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। दवाइयाँ तो आपको नई मिलेगी ही मिलेगी बहुत सारी, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम मिलेंगे जो हमें रूटीन में हमारे मरीज हमारे पास लेके आते हैं और हमारे पास उनका कोई बहुत संतुलित या बहुत ही आसान सा जवाब नहीं होता है। बट इफ यू बेस योर रेमेडीज or you base your knowledge of mathematica on hearing guiding symptom, you will really enjoy your practice much more than what you are doing now. This is what I wanted to convey through this presentation. So thank you very much for this patient hearing, I would say, more than 1.5 hours. And thank you very much for giving an opportunity to interact with the fellow colleagues of Ahmedabad. And it was indeed a pleasure for me to be here to see Bhaskar bhai. I can see him regularly. So Ketan bhai, bada maja aaya, and I really enjoyed. And if you have any questions, you're welcome for that. Yes, sir. Thank you, sir, for this wonderful lecture and bringing into light the lesser known remedies, sir. There's a question that in materia medica, how we can compare herring with boric? No, boric is basically a clinical mathematica, and there is no question of comparing both mathematicas because both are having a very different way of presentation. Boric is an evolved mathematica which evolved later on with the base of or with the knowledge of many source books. But herring is not comparable with the boric. Why? Because herring itself is a source book. तो बोरिक डेवलप ही बाद में हुई है और बहुत सारी सोर्स बुक्स के थ्रू उन्होंने अपना लिटरेचर लिया और एक मैथमेटिका क्लिनिकली कंपाइल करी। बट हेरिंग का जो मैथमेटिका है वो इटसेल्फ इज ए सोर्स बुक, सो देयर इज नो वे वेयर यू कैन कंपेयर बोरिक मैथमेटिका और हेरिंग गाइडिंग सिम्टम. दिस इज entirely two different platforms, you can say. I will just add a few things, sir. Dr. Jain has excellently talked about the pure old remedies or almost rare remedies in a beautiful way. Thank you, sir. Thank you very much. It really teaches a lot to the students to understand that the value of herring is something excellent. Herring has actual experimentation, or rather proving, or everything that is written has been proved, verified on the patients. Boric is different. Boric has collected a lot of clinical condition where mathematics has been, medicine has been used. Actually, Kane's lecture was based on the herring's guiding symptom, and even Boric is based on herring, but a lot of other clinical condition therapeutics has been added. So there is a vast difference. This is the basic book. Thank you very much, sir, for having a beautiful lecture. So people will now start reading the things. Okay, sir, another question sir. Yes, sir, another question that in which potency you use this lesser known remedies and from where to get these remedies because it's not easily available. Regarding potency, certainly rule is always same. There is no different rule when you use these remedy. The rule is always the same whether you are using arnica or you are using nicolam. The rule for potency is always same. I cannot fix myself in any potency, and definitely whichever the situation patient calls for,
I go for that kind of potency, whether it is 30, 200 or 1 m, depending on the state of patient. I would not say for any specific potency, but there is one limitation I can say, that availability itself is a big issue. But what I checked in many pharmacies, that most of these remedies are available. I really check, because I also run a pharmacy and I could found, like I was talking about मेटल कम्युनिटी, मैंने एक अपडेट कर दिया फेसबुक पे, और उसके बाद जयपुर में मेटस कम्युनिटी लेने वालों की बाढ़ आ गई. तो I would tell you that there are 2-3 pharmacies which had मेटस कम्युनिटी and it was easily available. बहुत सारी कलकत्ता की कंपनियां हैं जो इन दवाइयों को आज भी बनाती हैं, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि हम इनके बारे में जानते ही नहीं है, तो हम मंगाते ही नहीं है. लेकिन पुराने जो टीचर्स थे, पुराने जो ऑथर्स थे, इनके बारे में जानते हैं, और ये दवाइयां बहुत इजीली अवेलेबल है. इनमें से कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपको अवेलेबल नहीं हो. ज्यादातर दवाइयां आपको मिल जाएगी. अवेलेबिलिटी इज नॉट ए बिग डील. Sir, या another question सर is, काफी कॉमन दवाई है, इट्स इजीली अवेलेबल. या सब मिलती है ये दवाइयां, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है. okay, sir, another question is asked that can you share your experience how you have become so much familiar with the remedies from hearing guiding symptoms? How to study the remedies from hearing guiding? See, I can just give one of my testimonial that once I was teaching Actia spicata in my classroom. Actia spicata is a very small remedy, and I was really fond of that time when I started my teaching. I was really fond of Vitholkas. I was very much fond of many other teachers of modern day who was teaching mathematics in a modern style. एंड मैं भी एक्टिया स्पाइटिका पढ़ा रहा था, तो उसमें एक सिम्टम आता है एक्टिया स्पाइटिका में, जिसके लिए विठोल्कस ने बहुत सारे पेजेस लिखे हैं कि एक्टिया स्पाइटिका इज लाइक लाइकोपोडियम, इज ए वुमेनाइजर. एंड जैसे लाइकोपोडियम होता है कि वो हर फीमेल को एक अलग एंगल से देखता है, and he is a diplomatic individual and he has a lot of symptoms related to his sexuality, and that part of Actia spicata was highly elaborated from विठोल्कस लेक्चर. मैंने वो सारा पढ़ाया बच्चों को, और मुझे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि जब भी हमने कभी ऐसी पिक्चर देखी, when we try Actia spicata in our own practice, in our own OPD, we could not find much success with these kind of symptoms. So this compelled me to look कि ये symptom आया कहाँ से. तो then I came to know that Vitholkas has taken this symptom from the hearing guiding symptom. अब hearing guiding symptom में Actia spicata में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, debauchery. There is only one symptom mentioned in Actia spicata in hearing guiding symptom, debauchery. Beside that, he has not elaborated many things. While Vitholkas ने पूरी कहानी बना दी कि वो बिल्कुल वुमेनाइजर होता है, हर चीज को गलत एंगल से देखता है, उसके दो पहलू होते हैं, exactly like lycopodium. But the same thing when we tried in practice, we could not achieve success. So this compelled me to that why not to focus only on those books which are having the sources, which are having the basic symptoms, which are more clinically verified, and which are not mere stories. जो सिर्फ कहानियां नहीं है, जो सिर्फ प्रूविंग में सिम्टम जैसे जैसे आए, सिर्फ उन्हीं की सिंपल वे में बात करते हैं, और जब वो क्लिनिकली वेरीफाई होते हैं, उनका रिकॉर्ड डेवलप करते हैं. दिस इंस्पायर्ड मी टू work on hearing guiding symptom, and once I started, then it became a regular habit to study mathematics with hearing guiding symptoms. Okay, so this were the questions.